हाय एवरीवन, वेलकम टू द एआई मोबाइल कोडर्स कम्युनिटी। आप लोग अभी कौन इस ग्रुप में नहीं है, कम्युनिटी में नहीं है? इस कम्युनिटी में कोई कौन जो अभी नए हैं, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं? तो अभी इस टाइम इस कम्युनिटी में कौन नहीं है? आपको पता है एआई मोबाइल कोडर्स के बारे में? हम अभी इंट्रोड्यूस करते हैं। माई सेल्फ आनंद गौर। ओके, माई नेम इज आनंद गौर। आप लोग जो इस कम्युनिटी में होंगे हमें जानते होंगे पहले से, तो हम थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। इसके बाद ये क्यूआर कोड है, जितने इवेंट्स वगैरह से फोटो वगैरह हैं इसमें इस ग्रुप्स में आ जाएंगे। आप इसलिए यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो माय नेम आनंद गौर। आई हैव ए 9+ ईयर एक्सपीरियंस इन द मोबाइल industries, and I am also working in the TCS and previously working in the Samsung and the Tech Mahindra and various startups. And also I am working on the different stack in the mobile stack. My primary stack is the Android, and I'm also working in the iOS, Flutter, React Native, and Kotlin multi-platform. And last 2 years, I am focusly only for the AI in the mobile development, and will be integrating the AIs in the mobile applications, not for the vibe coding like anti-gravity, like codex, like those will be all using that. I'm not using this. That they have generating the code. They are implementing the AI in the mobile development, so that my application will be smarter. So I have write the 6 books. I think many will be also purchase my books. So that will be also know that is the helpful for the interview preparations and helpful for the other things also for the learning purpose. Like I recently published my system designs books and previously AI for the Android developers, and previously published in the Android and iOS, Flutter and React Native interview preparations. So that will be the, I have a 5.6 medium K followers. They have I'm also regularly share the blogs for technical for the interview preparations, and many topics are the AI and all the things we have. So that will be my introduction for that. So I introduce for the my community for why I'm creating for this. So that the this is my community that have 3200+ community members in currently in my community. So they have a 20+ cities. We have a connected the persons. They have also be joined this community. Have 40+ sessions online will be done. This is a first offline session will be organized to that to meet up the people offline. So they will be interacting with the speakers, and the physically you can connecting the networking, and the so much they will learn with the, बिकॉज हम ऑनलाइन में इतना ज़्यादा वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से हमने अभी हमारा लास्ट 3 मंथ से AI एक्सपर्ट सेशंस चल रहे थे, जो हर एवरी वीकेंड्स होते थे। मतलब जो टॉप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते थे, आपको टीच करते थे। हैकाथॉन भी साथ साथ चल रहा था, तो उससे आपको भी बहुत सारे सेशंस उसमें हुए थे, तो उससे भी आपको मिले। लेकिन हमारा ये था कि एक हम मीटअप्स करते हैं, लाइक लोगों को ऑफलाइन कनेक्ट करते हैं। जब तक हम ऑफलाइन कनेक्ट नहीं होते तब तक हम वो फीलिंग्स नहीं आती है, लाइक कि नेटवर्किंग का एक अलग से सीखने का। तो दैट्स मेन रीजन कि हमने एक ऐसा सेशन, दिस इज फर्स्ट कम्युनिटी मीटअप माय कम्युनिटी दैट विल डन। और अभी हैकाथॉन भी चल रहा है, जो 21 जून को इसका फिनाले है। जो हमारे 50 बिल्डर्स है ऑलरेडी बिल्ड कर रहे हैं एप्लीकेशंस, जो हम अभी कल उनका लास्ट डे है फॉर बिल्डिंग। सो दैट विल बी अनाउंसिंग 20 finalists. Okay, so that will be the my community is a 90% working professional and 10% the student from this community in the all over the India. That will be only focused on for the AI mobile development. But because they have a many community like GDG for the all the other community like GDG Mango, like they have a mix up community for that. But this community only for the mobile developers. If you have a mobile developer, so you can join this community and you can grow for that, and only for the mobile development related like AI for the mobile, Android, iOS, Flutter, React Native, Kotlin multi-platform. That will be the main stack to focus on this community. So that will be the main things. So developer to increase the join the community and to learn the daily lives of the apart from the jobs. सो दैट द आइडिया कैसे हमने शुरू किया था, मैं आपको एक आइडिया बताता। ये हमारी कम्युनिटी 4 साल पुरानी है। जब मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन से स्टार्ट किया था, उस टाइम मुझे भी प्रॉब्लम्स ऐसे फेस हो रहा था कि यार मैं अकेला पर्सन नहीं हूँ कि मैं अकेले प्रिपरेशन कर रहा हूँ इंटरव्यूज़ की। इसके मेरे साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं पे लैक हो रहे हैं, कहीं पे डिमोटिवेट हो रहे हैं, कहीं पे अच्छा इंटरव्यू होने के बाद भी वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं।
दैट विल बी द HR रिजेक्टेड और एनी थिंग्स वी आर फेसिंग। सो मैंने स्टार्ट किया था लाइक कि 4 साल पुराना, पहले 2022 में स्टार्ट किया था, इन द जून एंड जुलाई में स्टार्ट किया था, जब उस टाइम में इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने स्टार्ट किया। तो इसके बाद मैंने सोचा कि एक ऐसी कम्युनिटी बनाते हैं कि लोगों को यहाँ पे कनेक्ट करके, हम इंटरव्यूज दे रहे हैं या प्रिपरेशंस कर रहे हैं, लोग कनेक्ट करके हम साथ में एक होता नहीं, स्टडीज में हम कॉलेज में स्टडी ग्रुप स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे एक कम्युनिटी बना के हम स्टडीज करते हैं। जो क्वेश्चंस हमने कहीं पे इंटरव्यू दिए, तो हम क्वेश्चंस उसको शेयर कर दें, लोगों को दूसरा भी कोई वहाँ पे इंटरव्यू दे तो उसको भी हेल्प मिल जाए। तो इससे क्या होता है कि लोगों को मतलब अगर मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, अभी किसी का नेक्स्ट वीक होने वाला है, तो उससे क्वेश्चंस मिल जाता है, एक आइडिया लग जाता है कि हम उससे क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो हम उससे अच्छा और प्रिपरेशन बेटर कर सकते हैं। तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया था 2022 से, कि हमने एक कम्युनिटी बनाई, वहाँ पे लोगों को कनेक्ट किया, लाइक लिंक्डइन, अलग 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 प्लेटफॉर्म। तो पहले मैंने लिंक्डइन से स्टार्ट किया, तो मैंने वहाँ पे पोस्टर्स वगैरह किए कि जिसको भी ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। सो दैट विल द 4 ईयर। तो इसके बाद पहले मैंने एंड्रॉइड से स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा मेन प्राइमरी स्टैक तो एंड्रॉइड था, तो मैंने एंड्रॉइड से स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे लोग भी कनेक्ट होते रह गए, तो iOS, इसके बाद फ्लटर, रिएक्ट नेटिव, सारे प्लेटफॉर्म के इसमें कनेक्ट हो गए। तो हमने सोचा कि सब ऐसे प्लेटफॉर्म बनाते हैं कि केवल ये कम्युनिटी केवल मोबाइल फोकस्ड होगा। जितने भी सेशंस आप देखते होंगे कि इतने इंडिया में डेली कितने इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन कोई भी एक इवेंट्स एक चीज पे फोकस नहीं होता है। ठीक है, हमारा मेन फोकस है कि मोबाइल में क्या अपडेट्स आ रहे हैं, क्या नई चीजें आ रही हैं, उसको सारे को लोगों को इन्फॉर्म करना। तो इस वजह से हमने ये कम्युनिटी बनाई। ठीक है, तो ये था एक रीजन। तो हमने 2020 से स्टार्ट किया था, जो मैंने आपको बताया। दैट विल बी स्टार्टेड फॉर द एंड्रॉइड कम्युनिटी, फॉर द इंटरव्यू एक्सपीरियंस, फॉर द प्रिपरेशन लाइक रिक्रूटर कॉन्टेक्ट नंबर, लाइक आई हैव लाइक received any recruiter's contact number or any interview schedules. So I posted that that information to the community to help to the other things also. So that was the main reason to grow the developer with me. Like, सो दैट विल बी द 2022 में स्टार्ट किया था। 23 में भी मल्टी प्लेटफॉर्म मैंने एक्सपेंड किया, लाइक ये iOS, फ्लटर, रिएक्ट नेटिव एंड KMP। सो दैट विल बी यूजिंग दिस आल्सो। एंड 2024 में मैंने बहुत सारे सेशंस किए थे, लाइक अपडेट्स फॉर द इंडस्ट्री ट्रेंड्स, फॉर द ऑनलाइन मीटअप्स, दे विल बी आल्सो लाइक दैट। सो 2025 में जॉब्स अलर्ट्स मैंने स्टार्ट किया, लाइक कि हम जो से जॉब्स वगैरह पे हम प्रिपरेशन करते हैं, लाइक कि हमारे पास लिंक्डइन पे सबके पास इतना कनेक्शंस नहीं होते हैं। आई हैव 33,000 के फॉलोअर्स इन द लिंक्डइन, बट ऑल सबके पास तो नहीं होते हैं, लाइक कि हम इतना सारा कनेक्शन के लिए। तो वहां से हमारे पास पोस्ट आते थे, लाइक कि naukri.coms एंड लिंक्डइन, they all be accessible, but they will be many HR will be posted on the in your timelines, so they will be not getting that post in the you have not getting. So that we also posted in the LinkedIn my community, so help to the other also. They also be have a LinkedIn may have a linked many companies, so they also be referral, they also be that will be the main focus of this community for the 2025. So that will be started. And 2026 is the AI first features that we will have focused on the AI. You have also been known that you have joined the group, so I am also posting many things AI related daily basis for the weekly, and there will be blogs and many things in the AI basis. They have coming in the androids also. So that with the main things in this community. सो जो हम अभी डेली जॉब्स अलर्ट्स हम भेज रहे हैं, दैट वी बी ब्लॉग्स, प्रिपरेशन मटेरियल्स, दे आल्सो बी शेयर। मंथली मीटअप्स हम ऑनलाइन कर ही रहे थे, अभी हम इस साल से ऑफलाइन करना स्टार्ट किया। दैट विल बी फर्स्ट टर्न, and that will be expert sessions. They have every weekend will be going on the last 3 months. They will be they also be the referrals and guidance provided for the any many developers, like they have a stuck in the careers. They also may call. I am guidance to all of you that they have a call to call me. So for the I am guide, I am stuck for the career. They have a career breaks. They have many things. They will be also guide that. So that will also one is the hackathon. So that will the very first, this is a world first hackathon. So they will be provide only for the mobile developers, not for the any other developers. Because जब हम मोबाइल अभी जितने भी हैकाथॉन्स वगैरह चल रहे हैं आप देखते होंगे, लाइक कि उसमें सारे स्टैक्स के होते हैं, बैक एंड फ्रंट एंड जो भी आप देखते होगे, उसमें मोस्टली ज़्यादातर मोबाइल्स के बहुत कम ही होते हैं। मैंने कितने भी हैकाथॉन अटेंड किया है, अगर 1000 पर्सन होते हैं तो उसमें से 10 खाली 15 मोबाइल डेवलपर्स होते हैं, और सब मोस्टली अलग अलग स्टैक्स के होते हैं। तो मेरा मेन फोकस था कि हम ओनली फॉर द मोबाइल डेवलपर टू कनेक्ट दिस हैकाथॉन only for that. They have a Android, Android, iOS, Flutter, React Native. That will be the main platform to develop this hackathon to that. और इस
जो इस मोबाइल हैकाथॉन्स में हमने 3 to 4 मंथ्स अभी सेशंस किए होंगे, लोग बहुत सारे लोग इसमें 20 सेशंस किए थे, जो 4th of April से स्टार्ट होते हैं। प्रैक्टिकल सेशंस होते थे, लाइक टॉप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स विल बी कम यू टीच यू फॉर द डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन द AI इन द मोबाइल डेवलपमेंट। तो हमने अभी 8 जून को लास्ट संडे को इसका ओवर हुआ है, दैट विल बी फिनिशिंग द 3 months journey, and there will be 20 sessions will be covered. There will be 20 AI topics from 3 to 4 June by top industry experts will be giving the Google expert, like further working on the Google, Microsoft, Walmart. They have also be the main things. So that will be the submitting, and this hackathon will be the I will be telling you because आपने जितने भी hackathon सुने होंगे 24 आवर 48 आवर 72 आवर्स में ही खत्म होते हैं मोस्टली, बट दिस हैकाथॉन विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर हैकाथॉन। लाइक इसमें हम ये करते हैं कि इसमें आप अपने आइडियाज सबमिट करोगे, लाइक दे विल बी यू हैव फर्स्ट वी हैव रजिस्टर्ड द आइडियाज एंड दे विल बी सॉल्विंग व्हाट्स प्रॉब्लम, लाइक रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, नॉट फॉर द एनी फॉर द 24 आवर 48 आवर 72 आवर्स में जो भी छोटे से मोटे। आप इसमें आइडियाज जो रियल लाइफ में हम AI से उसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट विल बी द AI फोकस्ड AI हैकाथॉन। तो दैट विल बी सॉल्व बाय AI होगा। आप उसमें सबमिट करते हो, पार्टिसिपेट करते हो। इसके बाद हम हर वीकली जो आपको AI एक्सपर्ट सेशंस होते हैं आपके ऊपर से होते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके तो इन्विटेशन जाते हैं। जो बाहर से भी अगर इंटरेस्टेड होते हैं वो भी कर सकते हैं, लाइक कि हमारी कम्युनिटी के ओनली, नॉट फॉर द अदर थिंग्स। अगर वो कम्युनिटी में है तो हम लिंक भी शेयर करते थे कि वो आके ज्वाइन कर सकें। तो मोस्टली अटेंडेंस 75-80 ऑन एवरेज होती थी, जो हमने 3 मंथ्स में किए हैं। और कभी कभी 150 150, तो मतलब ऑन द डिपेंड्स ऑन द सेशंस लाइक दैट। ओके, तो ओनली फॉर द मोबाइल्स ऑन दिस इज द लाइक, ये हैकाथॉन में ऐसा था कि लाइक कि हम जैसे भी जितने भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं, लाइक जितने भी पार्टिसिपेंट्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो दैट विल बी द फर्स्ट स्टेट आफ्टर रजिस्ट्रेशन विल बी क्लोज। सो दैट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द 100%, लाइक कि हमने 100 को उसमें आइडियाज के बिहाफ पे फिल्टर किया। इसके बाद दैट विल बी नेक्स्ट वीक they will be filtered for the top 50. Only for top 50 will be the build the projects. They will be submit the ideas. They have a prototypes. They have a building for the 1 week, 1 week 8 to 9 days to build the prototypes. So that will be submitting the ideas, and they will be after they will be selected for the top 20 finalists. Those will be building on the top 50. So that will be top 50 will be presenting on the judge front of the judge for the for 21st of June of the finale. So that will be presenting on the judge. So what will be implementing in the AI in the mobile development. So what's problem you have solved. So that the main things and judges will be decide for the ideas and the votes for that ratings. So that will be decide with the first and second and third winners for this. This is the main motive of this hackathon. So the all the like they have already I have covered like all the application like top 100 first phase, then top 50, the second phase top 20 is the demo build for this hackathon. So then top 3 is the grand finale for that they have selected. सो दैट विल द मेन थिंग्स हमने ये कवर कर रहे हैं लाइक हमारी कम्युनिटी में। और अभी हमने टारगेट कर रखे हैं कि हम सिटीज़ वाइज लाइक हमारी जो जितने भी डेवलपर्स हैं मोस्टली तो हर सिटीज़ के हैं, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, लाइक टियर सिटी, Tier 1 सिटी एंड मुंबई। तो लाइक सबकी डिमांड है कि इस टाइप से सेशंस होने चाहिए, लाइक कि हम जितना ऑफलाइन अट्रैक्टिव होते हैं, हम जितना नॉलेज कर सकते हैं, लाइव रियल टाइम पे हम पूछ सकते हैं स्पीकर से जब सब कुछ। तो उस टाइम हम इस वजह से हम ऑफलाइन कर रहे हैं। तो हमारा ये प्लान है दैट विल बी द फर्स्ट इवेंट्स लाइक दैट इज ऑफलाइन, देन विल बी प्लान टू द सिटीज लाइक बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, Pune, and that will be the main thing. Top 10 cities will be covered on the next 1 year. So that will be the main motive. So so that will be the main community introduction. So that will be the main things my sides. Okay. So that you, if you have anyone not joined this community, you can join this QR code, and they have already joined. So that will be the very good for that. Okay. Thank you so much for that my sessions. If any questions, you can ask me anytime, and I will be introducing the first speakers. Like I will be introducing that. Okay, I will coming for that. हेलो एवरीवन। सो आज हमारा टॉपिक है, द टॉपिक इज ऑन डिवाइस AI on iOS. So we are I'll take you through the journey of training a model using 𝗷𝗵𝗃 and converting it to CoreML model and then using it into iOS application. So we'll see the complete journey of taking a custom model, training it, and then shipping it in an iOS application. Okay.
So before starting, there is some brief about me. So I am engineering manager at Tata Click and have 9+ years of experience building applications. I have shipped more than 30 applications, and I have experience with a lot of niche frameworks that people are scared to work upon. I have worked with Metal, with CoreML, Vision framework, and a lot. So this presentation is mostly around Apple Neural Engine and Apple Vision framework. Okay. So this was a requirement. This was search in e-commerce. So जैसे कि आजकल लोग हो गए हैं, तो वो कुछ भी टाइप करना नहीं चाहते सर्च करने के लिए. दे आर जस्ट कि क्लिक करा पिक्चर और उसमें जो भी कपड़े हैं, क्लोथिंग है, एसेसरीज है, वो हम सर्च करके दिखा दें. सो दिस वाज आवर मेन प्रॉब्लम जो हमें सॉल्व करनी थी. और बिफोर डाइविंग डीप, पहले क्या होता था, वी मोस्टली यूज क्लाउड एआई. सो वॉट एवर वी डू फॉर दैट, वॉट वी डू इज हमने इमेज को अपलोड कर दिया सीधे सर्वर पे, और अब सर्वर पे एक वो पहले उसमें डेटा निकालेगा मॉडल, और फिर उसके बेसिस पे हमें सर्च रिजल्ट देगा. बट उसके साथ क्या इश्यूज हैं? फर्स्ट इज लेटेंसी. हम जब भी कोई इमेज अपलोड करते हैं, अगर हम एक अच्छी क्वालिटी की इमेज अपलोड करेंगे तो इट विल रिक्वायर डेटा, इट विल रिक्वायर टाइम, है ना. दूसरा क्या है कि वो अगर एक हमारा ML मॉडल वहां पे सर्वर पे डिप्लॉयड है, so it will bring a cost with us, right? And as everyone is moving towards privacy and knowing their rights and privacy, so people don't want that their images to leave their devices and go to the internet as much they can avoid, they are trying to avoid it. So on device AI, it gives us zero network latency, absolute user privacy, because nothing is leaving their device. It is on their device. All the computation and everything is done on their device. And zero backend API overhead. So there is no internet required for this, no latency, no overhead. And what iOS Edge is, with Apple's neural engine and hardware accelerated matrix multiplication, it is way more easier to use, and in real scenario it is way more practical. तो एप्पल में what happens is, जो एप्पल का GPU AI, जो हमारा न्यूरल इंजन है, जो हमारा 𝗕𝗵𝗽 का कोड है, they all share a shared memory. So if we have captured an image, हमने फोटो क्लिक करा, उस फोटो को हमने पहले विजन फ्रेमवर्क को भेजा. उसके बाद अगर हमें उस पर कुछ मेटल ऑपरेशंस या शेडर लगाना है, शेडर रेंडरिंग करनी है, शेडर को भेजा. आफ्टर दैट हमने उसको स्विफ्ट यूआई पे रेंडर करा या कोर एमएल मॉडल को भेजा. उसमें कभी कॉपी जनरेट नहीं होगी, वो सिंगल फाइल जो हमने यूज करी थी वो शेयर्ड होगी अमंग ऑल. तो वो हमारा मेमोरी ओवरहेड बहुत कम कर देता है. तो दिस इज explained here as well. Unified memory architecture eliminates costly copy operations between CPU and GPU or ANE boundaries. Apple Neural Engine is specialized energy efficient cores built specifically for neural network compute. तो यहाँ पे we don't need to decide कि कब CPU, कब GPU, कब ANE, वो खुद से डिसाइड करता है. अगर हमारा मॉडल, तो दिस वाज आवर प्रॉब्लम इन जेसन. वी need to take a picture, we need to do the inference on it, and we need to extract the tags and labels according to it. So for ingestion, we will be using 𝗕𝗵𝗽 because it will be safe, secure. A user will give the permission. They can allow us permission to one image, two image, or their entire image quality. And for the inference part, we'll use a YOLO V8 custom model and train it and convert it into a new CoreML package that will use our neural engine, and then it will, with the help of vision framework, it will give us the tags that we can search on our website or anywhere. Okay. So what is YOLO? So YOLO means you only look once. So YOLO, what YOLO model does is, when you train them, they look the data set once and remember it, and based on that, they build up a precision, and they build up a precision that this is the precision they'll be giving us the answers in. So if I have trained a model
over 20,000 images, and in just one pass, it will give us pretty much good results. But when we training it, we can use multiple epochs. So the number of epochs we use, the 𝗂𝘂𝗍𝗃 model will be trained that much times on that image set. So for our requirement, we have used colorful fashion dataset from Kaggle. This is a demo that I am representing here, but on the production, when we do it, we have to create a custom datasets, and for that we require a lot of images, and for that we need to do boxing, and we need to give the labels and all. So it is pretty much very tough work to do. And 𝗂𝘂𝗍𝗃, we mostly use 𝗂𝘂𝗍𝗃 medium models, but medium models are larger in size, though they have better precision and accuracy. But in productions, we can use nano models, but for those, we need better data set to train it, and it will require more epochs and more times to train it. So for that, we might need a GPU properly to train it, because if we are using free tier GPUs, it will take us a lot of time and effort. So it can take around, if we are training it on a good data set for 100 epochs, it can take around 2 days on a free GPU tier. But normally, for this data set, 5 epochs, if we are using Kaggle free GPU, it will take around 2 hours. Okay. So now we have trained a model using PyTorch, and it is still a computer model, a desktop model. So it is pretty heavy in size and can't be used directly into an application. So there ONNX comes into picture. What ONNX does is it bridges every ML model. So PyTorch, CoreML, or any other, if you can take TensorFlow Lite, anything. So it bridges all. Every ML model understands ONNX, and we can use it to convert into any of the models from PyTorch to CoreML. But if you are using Android, you can convert to TensorFlow Lite or any. Okay. And for the iOS, we must use offset 17 because the versions higher to that are not supported yet on iOS. So it is the highest offset 17 that is being supported on iOS currently. Okay, so for the model conversion, converting PyTorch weight to a modern Apple ML package, it goes 3 high-level steps: export, convert, and save. So when we train a model on a data set, it gives us best and worst models. And we'll be using best models to convert it into our CoreML model. Now, what we do is we'll first generate simplified ONNX weights. So we'll first wait, the image is floppy. No, I can, let me try. Okay, no. So we'll generate it into ONNX weights first, and then we'll convert it into CoreML models. Using CoreML tools, we'll convert it into CoreML models, but we are using float 16 here. I'll explain in the next slide what this means to us. So these models, these Python models, they are 30-bit, 32-bit size. So they are pretty much heavy and take a lot of memory and space. But if Apple Neural Engine medium models, we are using float 16, but we can use int8 as well. Float 16 is, you can say, half the size of Python model, around half, and this int8 is around 1/4 of the size of Python model. But to train this int8 model, we need to do the calibration of the data set. So we have trained the model with 20,000, 30,000 images, and we have made a normal model. So if we use float 16, it will work fine. But the size of the model is around 50 MB. That is too big for a production application because we can't take just 52 MB for a model to deploy. So what we do is we make a nano model with int8, but for that we'll need a calibration data set. तो अभी तक हमने क्या करा कि हमारे पास 20,000 इमेजेस थे, उन पे हमने बाउंडिंग बॉक्सेस बना रखे थे कि ये शर्ट है, ये पैंट है, और हमने उनको ट्रेन करा. अब
हमें उसको बताना है कि डिफरेंस कैसे करेगा वो बाकी सब में। अगर एक इमेज में पैंट भी है, शर्ट भी है, तो हमें उसको एक कैलिब्रेशन डेटा सेट देना पड़ेगा। वो उसको एक रेंज बताएगा कि हम इस रेंज से इस रेंज तक डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वो पूरी रेंज हम उसको एक देंगे अराउंड 500 डेटा सेट्स की, जिसपे वो कैलिब्रेट करेगा अपने आप को कि वो कैसे डिफरेंशिएट करेगा। अगर मेरे पास एक फोटो में 5 लोग हैं, किसी ने शर्ट पहनी है, किसी ने जैकेट पहनी है, किसी ने शूज पहने, किसी सैंडल्स पहने हैं, और मेरे को वो सब डिफरेंशिएट करने हैं, तो हम उसको एक कैलिब्रेशन डेटा सेट देंगे जिसके बेसिस पे वो डिफरेंशिएट करेगा उनके बीच में। ठीक है। इस डेमो में हमने फ्लोट 16 पिक करा है, बट इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट जब हम अपने कस्टम डेटा सेट पे ट्रेन करेंगे, तो वी हैव बेटर डेटा सेट, हम पे डेटा सेट की क्वालिटी अच्छी होगी और कैलिब्रेशन डेटा सेट होगा, तो इट विल बिकम इजियर टू डू दिस। एंड प्रोडक्शन पे हम 50 MB का मॉडल नहीं लेके जा सकते। दिस नैनो मॉडल विद इन इज अराउंड 5 to 6 MB, तो अराउंड 1/10 साइज है उसका। ओके। अब इसके बाद वी हैव आवर मॉडल। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है iOS में। तो वी आर यूजिंग स्विफ्ट एंड विजन फ्रेमवर्क। वी आर यूजिंग ग्रीन आर्किटेक्चर। if let me see if I can show you the code a bit as well. uh, um, इसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। uh, आया क्या आया? ठीक है। आगे। ठीक है। ठीक है। तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू पीपल आर अवेयर विद iOS। कितने लोग हैं iOS यहाँ पे? ठीक है, हैंडफुल ऑफ पीपल आर। सो ठीक है, हम थोड़ा जेनरिक भी कर लेंगे इसके बारे में बात। तो वी आर यूजिंग आर्किटेक्चर। वी हैव अ डेटा लेयर where the data layer is the only layer that is working with Vision, or that is the in the ingesting the font size. Okay. ये कर रहा था, हो नहीं रहा था। ठीक है। अब ठीक है, विजिबल है ना? तो वी आर यूजिंग क्लीन आर्किटेक्चर। वी हैव आवर डेटा लेयर where all the business logic is. We are our domain layer that is the mediator between the data layer and the presentation layer that have our use cases that will call the data layer, get the data from that, and then convert it into our models that are needed, and then we'll give to the presentation layer. So the data layer, if you see, we have repository. So first, this is the close detection unit. Okay. Here we are using the vision framework. So what we are doing is we are making a VN CoreML request here, and we are using our model into it. And the one thing that is to note here is this scale to fit. ठीक है, image crop and scale option. So when we train a data model, a CoreML model on a data set, there are those images are of a certain size. So mostly we use 640 into 640 images, but that is pretty much a standard. But अब एक डेटा मॉडल अगर हमारा कोर एमएल मॉडल एक डेटा सेट पे वो है ट्रेन, तो जो इमेज उसको चाहिए वो भी सिमिलर साइजेस में चाहिए। बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम उसको हमेशा सेम साइज की इमेज दे पाए। तो विजन फ्रेमवर्क हैंडल्स इट बाय डिफॉल्ट। हम उसको अगर ये इमेज क्रॉप एंड स्केल ऑप्शन को स्केल टू फिट कर देंगे, तो वो उसको अपने आप डाउन स्केल अप स्केल जो भी उसको करना होगा साइजेस, वो डाउन स्केल करके उसको दे देगा। एंड बेस्ड ऑन दैट इट विल जनरेट द रिजल्ट्स। It will perform the request using that model, and then give us the results back. So we'll get it into a view model. Okay, so view model is working with the use case only. View model doesn't know about the repository. It is just
calling these protocol methods of the use case. It will that detect clothing, and then this will call the repository for us, detect clothing in request, and then make the detection result with items, processing time, image size, and here we have we perform detection and it will get the results back to us. Okay, so it is doing just calling stuff and getting the results back. It doesn't know anything about the business logic. So this is pretty much the code we have. Second. Okay. So we are using VN CoreML request. There is one more thing. Abhi to we are just dealing with images, but when we deal with live camera, अगर हमें के मॉडल को एक लाइव कैमरा पे इम्प्लीमेंट करना है, सो वहाँ पे देर आर टू थ्री प्रॉब्लम दैट मेजर के पास कुछ मैंने बाद में लिखी है इसमें, बट एक चीज वहाँ पे है कि हमें एक फ्रेम रेट कम से कम वी आर ड्राइंग 30 FPS, तो हमारे पास बहुत टाइम नहीं है फ्रेम्स के बीच में। तो अगर हम बार बार ये अपना विजन फ्रेमवर्क का जो रिक्वेस्ट हैंडलर है वो बार बार जनरेट करेंगे तो उसको टाइम लगता है। सो वो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, फिर हमें शटरिंग दिखने लगेगी स्क्रीन पे। तो व्हाट विल डू देयर इज हम रीयूज करेंगे उसको, हमेशा नया वो ना बना के रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट को रीयूज करेंगे, सेम ही हैंडलर यूज करेंगे, बस उसी में बार बार हम अपना फ्रेम जो भी हमारा पिक्सल बफर होगा वो अपडेट करते रहेंगे और सेम ही उसको यूज करेंगे। तो वो हमारी जो शटरिंग है उसको बहुत कम कर देगा। ठीक है, आप प्रोडक्शन पे यही चीजें हैं, कोऑर्डिनेट ट्रैप्स। तो जो ये विजन फ्रेमवर्क है उससे जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे ना, वो हमेशा वाई एक्सेस इन्वर्टेड मिलते हैं। तो वो हमें ध्यान रखना होगा कि हम जब भी उसको प्रोडक्शन पे यूज करेंगे हमें उसको वाई एक्सेस इन्वर्ट करनी पड़ेगी, और जो उसका साइज होगा वो इमेज के हिसाब से होगा, हमारी स्क्रीन पिक्सल्स के हिसाब से नहीं होगा। तो हमें उसको पिक्सल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी इमेज की विड्थ और हाइट से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, दूसरा न्यूरल इंजन वेरिएंस परफॉर्मेंस वेरीज। ठीक है, एक चीज और इसमें हमारे पास दो तरह के कोर एमएल मॉडल्स होते हैं, एक एमएल मॉडल और एक एमएल पैकेज। उनमें क्या डिफरेंस होता है, जो एमएल मॉडल होता है वो हमारा लीगेसी है, पुराना है, और वो मोस्टली ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि कब मेरे को जीपी यूज करना है, कब सीपीयू, कब मेरे को एएन यूज करना है। बट जो एमएल पैकेज होता है वो हमारा एएनई को यूज करने के लिए बना होता है, तो वो अपने आप से सब कुछ यूज कर पाता है जैसे भी उसको करना है। तो हम ट्राई करते हैं कि हम एमएल पैकेज यूज करें, क्योंकि वो प्रॉपर न्यूरल इंजन पे काम करने के लिए बना है, बट एमएल मॉडल नहीं कर पाता है। तो परफॉर्मेंस अगर हमें चाहिए तो हम एमएल पैकेज को ही यूज करें। ठीक है, memory eviction यूएस evicts loaded models under pressure, handles error gracefully and तो इनिशियली जब हम पहली कॉल करते हैं किसी भी मॉडल के लिए तो इट टेक्स अ लॉट मोर टाइम देन एवरी अदर कॉल। तो व्हाट विल डू इज विल डू अ वार्म अप इनिशियली, हमें अभी मॉडल यूज भी नहीं करना बट हम उसको वार्म अप कर लेंगे, हम उसके साथ एक एम्प्टी रिक्वेस्ट या एक रिक्वेस्ट बैकग्राउंड थ्रेड पे पहले करके रख लेंगे। और कभी भी हम अपने मॉडल को मेमोरी थ्रेड पे यूज नहीं, मतलब मेन थ्रेड पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक भी कॉल अगर हम मेन थ्रेड पे करेंगे अपने एमएल मॉडल के रिलेटेड तो वो हमारी यूआई को बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करेगा फिर। ठीक है, और इनपुट स्केलिंग, पहले इमेजेस को डाउन स्केल करके रख लो जिससे कि तुम्हें बार बार जो विजन फ्रेमवर्क है उसको ज्यादा काम ना करना पड़े। हम इस प्रोजेक्ट में भी हम पहले उसको डाउन स्केल करके रख लेते हैं 640 पे, क्योंकि हमारा वो वैसे भी 640 ही लेगा एमएल मॉडल, तो उसको पहले डाउन स्केल करके रख लेते हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट पॉइंट एक बार एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज बाय एक्सेस एंड ठीक है। तो जब हमारी कोई भी, एक मिनट स्क्रीन ही दिखा देता हूँ आपको, एक सिमुलेटर की स्क्रीन होगी कहीं पे। अच्छा मेरे को यार इधर मूव करनी पड़ेगी, रुको वीडियो में मूव कर लेता हूँ। इसमें पीपीटी में है शायद वीडियो, एक बार चेक करता हूँ। ठीक है, ये वीडियो है, मैं इसको प्ले करता हूँ। जैसे ये स्क्रीन है,
तो नॉर्मली जो हमारे पिक्सल स्टार्ट होते हैं वो 0 0 यहाँ पे होता है, और हम ऊपर से नीचे की तरफ कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं हमेशा। अगर हमें ये बटन का इसका लेवल का देखें तो इधर से अराउंड 20 है इसका एक्स, और इसका वाई अराउंड 100 होगा, तो ये 20 100 हो गया। बट जो विजन फ्रेमवर्क देता है वो 0 0 यहाँ कंसिडर करके देगा नीचे। उसका 0 0 यहाँ से स्टार्ट होता है और ऊपर की तरफ चलता है। तो हमें अगर उसने 0 0 यहाँ दिया है तो हमें उसको इन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम तो ऊपर से, हमारा जो पिक्सल है वो ऊपर से चल रहे हैं, और वो जो हमें देगा वो पिक्सल्स की फॉर्म में नहीं देगा, वो पॉइंट्स की फॉर्म में देगा। तो हमें उसको पिक्सल में कन्वर्ट करने के लिए भी उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा अपनी स्क्रीन की साइज और उसके इमेज साइज और उसके विड्थ के हिसाब से, हाइट विड्थ के हिसाब से। तो वो हमेशा हमें वाई एक्सिस पे ही देता है, इन्वर्टेड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट देता है। जैसे कोर ग्राफिक्स हमें इधर से देता है, कोर ग्राफिक्स का 0 0 इधर से स्टार्ट होता है राइट से, उसका एक्स और वाई दोनों इन्वर्टेड होता है। ऐसे विजन में सिर्फ वाई एक्सिस इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक डेमो है। हमने एक इमेज पिक करी, इसने हमें इसमें से बाउंडिंग बॉक्स दे दिए कि ये शर्ट है, इसका कॉन्फिडेंस इसको इतना है, पैंट का कॉन्फिडेंस इतना है, शू से कॉन्फिडेंस इतना है। अब इसमें से हम इनको अलग अलग कर सकते हैं कि भाई ये शर्ट है, ये पैंट है, ये शू है। इनके फोटोज है हमारे पास अलग अलग। अब हमें इनको अगर फर्दर प्रोसेस करना है कहीं पे कि अब हमें इसका पैटर्न रिकॉग्निशन करना है एक अलग मॉडल का यूज करके, हम वो कर सकते हैं। या सिर्फ हमें यूजर को सजेशंस दिखाने हैं कि हम शर्ट्स के, पैंट के और शू के सजेशन दिखाएं। और हम अगर अभी इस डेटा सेट को कलर्स वगैरह के लिए भी ट्रेन कर दें तो ये हमें इसके साथ कलर्स भी दे देगा कि ये शर्ट है और ये कलर है उसका। हम मल्टीपल मॉडल्स यूज कर सकते हैं उस चीज के लिए। ठीक है, और हम इसके बेसिस पे यूजर को प्रोडक्शन से रिजल्ट लाके दिखा सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना जो अभी हमने करा। अब WWDC 2026 में एक नया है कोर एआई। अब कोर एआई कहाँ पे लाई करता है? अभी तक जो हमने करा, हमने कोर एमएल का यूज करा है। बट कोर एआई क्या करता है, वो जो अभी तक हमने करा है ये एक एंट्री पॉइंट बन जाता है कोर एआई के लिए। हमारे पास अब लेवल्स आ गए। बट कोर अभी हमें अगर इसको लुकअप करना है तो हम क्या करेंगे, ओपन एआई के एपीआई यूज करेंगे। अभी भी अगर हमें कुछ करना है कि हमें इस डेटा सेट के रिगार्डिंग कुछ डेटा चाहिए ये लेबल्स के लिए, या कोई अपने सर्वर को भेजेंगे, या कहीं से भी अगर हमें उसके रिलेटेड कुछ और डिटेल्स चाहिए तो वो करना पड़ेगा, हमें किसी भी क्लाउड पे जाना पड़ेगा। बट कोर एआई में क्या है, फाउंडेशन मॉडल्स है। तो जो अभी तक हम ओपन एआई के थ्रू कर पा रहे थे वो हम अपने डिवाइस पे ही कर सकते हैं। हमारे जो फाउंडेशन मॉडल्स है उससे हम डिवाइस से ही वो सेम चीज कर सकते हैं जो अभी तक हम मोस्टली इनसे एपीआई एपीआई से कर पा रहे थे। कोर उसकी ओपन ओपन एआई की, क्लाउड की, वो हम अब अपने डिवाइस पे कर सकते हैं यूजिंग द कोर एआई फ्रेमवर्क। तो ये एक बहुत पावरफुल शिफ्ट है। अब अभी तक जैसे हम नॉर्मली चैटबॉट एप्लीकेशन बनाते थे, तो चैटबॉट के लिए हमें ऐसे एमएल मॉडल की जरूरत तो है नहीं कि हमें कुछ उसको ट्रेन करना है, हमें उसके लिए डेटा सेट चाहिए। हमें एक सिंपल चैटबॉट बनाना है तो हम अभी हर चीज के लिए क्या करते थे, एपीआई करते थे। बट अब यूजिंग कोर एआई व्हाट विल डू इज हम जस्ट फाउंडेशन मॉडल को कॉल करेंगे कि ये सर्च है या ये चीज है, उसके रिलेटेड वो डेटा हमें अपने आप बना के दे देगा। हमें हर चीज के लिए सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं है, कोर ओपन एआई की एपीआई यूज करने की जरूरत नहीं है। तो उससे क्या होगा, लेटेंसी बचेगी, सर्वर कॉस्ट बचेगी। हमें सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते थे, इनके प्लान लेने पड़ते थे, वो कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब हम सिर्फ फाउंडेशन मॉडल्स का यूज, सिस्टम के फाउंडेशन मॉडल्स का यूज करके मोस्ट ऑफ द जेन एआई काम कर सकते हैं। जो भी हम जेन एआई का कर रहे थे अब हम अपनी डिवाइस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। और ये गिटहब और मेरा मीडियम का है, आप क्यूआर कोड स्कैन करके वहां पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस एनीवन? प्लीज। हाँ हाँ। नो नो नो, सो अभी तक जो हमने जैसे ये बिल्ड करा है इतना, ये हम उसके थ्रू नहीं कर सकते, ये अभी भी हमें कोर एमएल के थ्रू ही करना पड़ेगा। बट जो हम जनरेटिव एआई काम करते हैं, या अभी हमें इससे जो रिजल्ट मिला, हमें सिर्फ लेवल्स मिले। अब हम उन लेवल्स के बेसिस पे एक नेचुरल लैंग्वेज में कुछ हमें उसका बनाना है, या उसके बेसिस पे कुछ रिजल्ट फैच करने हैं, तो वो अभी हमें नहीं कर सकते, हम उसके थ्रू कर सकते हैं जनरेटिव एआई। अब हमें वो उस चीज के लिए ओपन एआई के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो हमें ये अपने आप करके दे देगा अपना फाउंडेशन मॉडल्स। हाँ, ऐप के अंदर जैसे भी हमें यूजर को नॉर्मल कुछ सजेशंस देने होते हैं, टूल टिप्स देनी होती है,
वो हम इन ऐप बना सकते हैं अपना एट द, मतलब अभी क्या करते हैं हम मोस्टली बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अभी हम सब कुछ स्टैटिक बना के रख लेते हैं, यूजर को कुछ वॉक थ्रू देने थे, स्टैटिक बना के रख लिए। बट अभी हम क्या कर सकते हैं कि अच्छा ये चीजें हैं, हमने फीड करा अपने उसको मॉडल को, वो हमें हमेशा यूजर के पर्सनलाइजेशन और रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमेशा नया वो बना के दे सकता है, टेक्स्ट बना के दे सकता है। या यूजर को एक चैटबॉट बनाना, तो हम पूरा ऑफलाइन चैटबॉट बना के दे सकते हैं यूजर को, अब उसको जाना ही नहीं पड़ेगा वहां तक। हाँ, ऑन डिवाइस पे मूव कर रहे हैं। मतलब एप्पल का मेन फोकस वही है कि जितनी कम चीजें सर्वर पे जाएं उतना यूजर की प्राइवेसी के लिए बेटर है। क्योंकि अगर आप ओपन एआई के साथ कुछ चैट भी कर रहे हैं तो एवरीथिंग इज देयर ऑन सर्वर। मेरी सारे बातें, अभी हम लोग इतने यूज टू हो गए हैं जनरेटिव एआई के, हम ओपन से चैट जीपीटी से इतनी इतनी बातें कर लेते हैं, लोग इतनी इमोशनल बातें भी कर लेते हैं ना। सो दैट इज क्रिएटिंग an इमोशनल vulnerability एज वेल, कि अब उनके पास वो डेटा है, दे कैन अटैक अस, सम हैकर कैन अटैक अस। तो द लेस थिंग्स लीव द आईफोन और द फोन, द बेटर। तो दैट इज द शिफ्ट देयर। या So the question is, हम्म compromise करने, like on device करने, तो हम्म size controls कितना है? Is minimum देखो, space कौन से वाले, किस चीज के रिगार्डिंग है ये? कोई ये होता है। कोर एआई तो हमें उसमें हमारी एप्लीकेशन के अंदर, इट डजंट सर्वाइव इनसाइड आवर एप्लीकेशन, वो हमारे फोन के अंदर बिल्ट इन है। अब हमारे ओएस का पार्ट हो गया एक तरह से, वो समझ लो। जैसे अभी हम लोग फोन यूज करते हैं, हमारे पास फोन में सीपीयू जीपीयू एएनई सब है ऑलरेडी। बट वो हमारे ऊपर है ना कि हमारी एप्लीकेशन क्या कितना यूज कर पा रही है। अभी हम नॉर्मल कैमरा फिल्टर एप्लीकेशन यूज करते हैं, वो मोस्टली सीपीयू पे काम करती है और स्लो होती है। बट अगर हम एक स्नैपचैट लेवल एप्लीकेशन सोचे, या मैं बताता हूँ आपको, एक जर्नी बताता हूँ अपनी, कि हमें शेयर चैट में जब मैं था, तो हमें स्नैपचैट लाइक फिल्टर्स बनाने थे। बट अगर हम उसको सिर्फ सीपीयू का यूज करके बनाएंगे ना, तो वो कभी भी हम यूजर को 30 FPS भी नहीं दे पाएंगे लाइव स्ट्रीमिंग पे प्रॉपर फिल्टर्स के साथ। और एक यूजर आज के टाइम पे एक्सपेक्ट करता है कम से कम 30 FPS, तो मोस्टली 60 FPS यूजर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो स्ट्रीम है वो बिल्कुल स्मूथ चले, उस पे हम लाइव कैमरा फिल्टर्स लगा पाए, व्हाट्सएप पे लगा पाते हैं आज के टाइम पे, हम स्नैपचैट पे लगा पाते हैं। तो वो अचीव करने के लिए हमें जीपीयू यूज करना पड़ेगा। बट जीपीयू तो हमारे फोन में हमेशा से था, बट हम यूज नहीं करते, हमारी मोस्टली एप्लीकेशन यूज नहीं हेलो। करती। हम सिर्फ सीपीयू पे ही सब कुछ जनता रन सर, करते हैं, आप और फिर एक हमारी एक एक चीज एप्लीकेशन, खाली करवा हमारा दो। फोन भी हीट होगा, हमारा बैटरी कंजम्पशन ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा जो सीपीयू है वो ओवर वर्क कर हेलो। रहा है। और यस हमारी सर। एप्लीकेशन जो हमारी पहले परफॉर्मेंस है वो ग्रुप पे स्लो भी नहीं होगी। आएंगे ना, बाद बट में अगर हम जीपीयू पे वो चीजें मूव करते हैं जो जीपीयू पे कर वेस्ट हो सकते हैं, जाएगा तो मटेरियल। हमारा फोन पे जो खाली पड़ा है हमारा जीपीयू, वो कुछ काम करेगा, सीपीयू पे काम कम हो जाएगा। तो एक बैलेंस बनेगा और हमारी एप्लीकेशन स्मूदर वे में काम करने लगेंगी। हाँ सो सर, वो दस फ्रॉम योर डिवाइस, इट दस इट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर दस एप्लीकेशन। नहीं नहीं, जैसे हम अभी 80 तक था नहीं, ठीक है। यूआई किट इंपोर्ट कर लेते थे, 75 ऐसे हम करवा कोर दीजिए ताकि, इंपोर्ट ठीक कर लेंगे। है, वैसे भी वो ज़्यादा ही हमारे फोन हमारे की। पास जो चेक इन आए हुए हैं इसमें से 55 है, 5 है। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, हेलो ये जी। चल रहा है कि 70 आप वो करवा दीजिए। हाँ हाँ, मतलब वो 10 60 आप 65 वो करवा दीजिए। वो तो नैनो मॉडल है, यूरो आपके क्रिएट नैनो मॉडल। हाँ हाँ हाँ। हेलो, ठीक है, ठीक। ओके, सो इट इज, मतलब हम जब भी कुछ कंसिडर अ लग्जरी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो व्हाट वी आर सेलिंग इज, वी आर सेलिंग एन एक्सपीरियंस। हम यूजर को एक्सपीरियंस सेल कर रहे हैं कि आप कुछ भी, मतलब सबसे पहली चीज व्हेन वी आर यूजिंग अ प्रीमियम एप्लीकेशन इज प्राइवेसी। मैं कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, मैं चाहता नहीं कि मेरा डेटा मोस्टली एप्लीकेशन लीव करे, मेरे पर्सनल फोटोज कहीं नहीं जाने चाहिए, है ना। मेरे पे कोई कपड़ा था एंड आई वांट टू सर्च सिमिलर टू इट, कि भाई ये मेरी शर्ट पुरानी हो गई बट मेरे को ये अच्छी लगती थी, आई वांट सम शर्ट सिमिलर टू इट। तो आई डोंट वांट माय पर्सनल पिक्चर्स टू जस्ट गो एंड बीइंग स्टोर्ड समवेयर और लुक्ड अप बाय समवन। सो दैट इज एन यूज केस कि हमें ऑन डिवाइस ही सारी चीजें करनी थी। वी डोंट वांट कि हमारा जो डेटा है वो लीव करे डिवाइस को, और इन्फेरेंस टाइम बहुत कम हो। अगर हम, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेंडिंग एन इमेज टू सर्वर, तो इन्फेरेंस टाइम आप मान लो एक इमेज को अपलोड करके सब कुछ करने का मिनिमम 800 मिली सेकेंड्स तो मान ही लो आप, उससे कम तो नहीं कर पाओगे। बट ऑन डिवाइस इन्फेरेंस 20 मिली सेकेंड में आपको रिजल्ट दे देगा। तो द शिफ्ट इज ह्यूज, मतलब 20 मिली सेकेंड एंड 800 मिली सेकेंड इज अ बिग गैप।
और अगर आप लोअर नेटवर्क पे हो तो वो गैप बढ़ते चला जाएगा। या हाँ, इट इंक्रीज, मैं बताता हूँ, 5 MB के Can I ask you अराउंड some द मॉडल इज questions? द फाइनल मॉडल, नेट मॉडल, इट विल इंक्रीज एप्लीकेशन साइज अराउंड 5 MB। बट आज के टाइम पे व्हेन the iPhone has minimum of 256 GBs on the upcoming devices or the new devices, people don't care much about the space, but they care much about the memory and performance, I guess. So that was our call, and yeah, that is it. हाँ 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 हाँ। देखो, हाँ, मॉडल जो ट्रेन होता है वो सिर्फ जो भी वो डेटा सेट देखेगा उसके बेसिस पे वो एक अपना परसेप्शन और एक वो क्रिएट करता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसको अभी 1000 या 1 लाख डेटा सेट पे ट्रेन करूंगा तो उसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। बट वो है कि उसका साइज वो एक्यूरेटली चीजों को वो करने लगे। अभी उसके पास जो डेटा है वो मिनिमल था, और जो डेटा सेट क्वालिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट करती है। अभी हमने एक ओपन सोर्स डेटा सेट इसमें यूज करा है, बट हम प्रोडक्शन पे जब इस चीज को करते हैं ना, तो वी प्रिफर मेकिंग आवर ओन डेटा सेट, क्योंकि हमारे पास वो रियलिस्टिक इमेजेस हैं। हम एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं ऑलरेडी, तो हमारे पास एक ह्यूज डेटा सेट है। और थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं जिनके बेसिस पे हम उस डेटा को डेटा सेट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम उस पे बाउंडिंग बॉक्सेस ड्रॉ कर सकते हैं, उससे लेबल्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वी गो दैट वे, और हम उस डेटा सेट पे फिर उस मॉडल को ट्रेन करेंगे। और हमारे पास एक कैलिब्रेशन डेटा सेट होगा जो बिल्कुल रियल डेटा सेट होगा, रियल यूजर्स का। और मतलब रियल डेटा सेट की हमारे पास जो रियल प्रोडक्ट्स हैं उनके बेसिस पे होगा वो, जो अभी हमारे पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स होते हैं। और उसके बेसिस पे विल ट्रेन इट टू डिफरेंशिएट बिटवीन दोज थिंग्स। तो इट विल क्रिएट अ मेजर इम्पैक्ट। मतलब डेटा सेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आपका डेटा सेट अच्छा नहीं है तो कितना भी आप उसको मॉडल को ट्रेन कर लो, कोई सेंस नहीं है। और ये भी नहीं है कि एक चीज, अभी हमें जैसे मैंने पता 5 epochs हमने करे इसमें, बट आइडली वी डू अराउंड 50 epochs ऑन प्रोडक्शन। ऐसा नहीं है कि अगर मैं 100 कर लूंगा तो बहुत अंतर आ जाएगा। बट हाँ, अगर हम बहुत ज्यादा डेटा सेट पे भी इपोच, मतलब बहुत ज्यादा epochs पे हम उसको ट्रेन करते हैं तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। अब वो मॉडल जो है ना, वो उसको रटने की कोशिश करने लगे, वो उनको ही याद करने लगेगा। तो वो प्रोडक्शन में रियल आंसर्स नहीं दे पाएगा, वो उनको सिमिलर फोटोज के ही बेसिस पे काम करने लगेगा। तो हमें एक मतलब ट्रेन कर करके, टेस्ट कर करके चेक करना है कि हाँ, ये हमारे लिए सही है इतना नंबर। तो एक्यूरेसी तो हमारे मॉडल की 99% हो गई, बट क्या रियल टाइम पे वो 99% एक्यूरेसी दे पा रहा है? तो दैट वी नीड टू टेस्ट। तो दैट इज द मेजर पार्ट, कि डेटा सेट बनाना और फिर उस मॉडल को ट्रेन करके टेस्ट करना कि हमारी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अभी कितना सूटेबल है। ओके, एनीथिंग एल्स, एनीवन? थोड़ा सा लंबा होगा। हाँ, ठीक है। तो आपका ई कॉमर्स का आपने application हम्म, बनाया। ये हम फंडामेंटली एज्यूम कर रहे हैं कि वो जो Sir, 20,000 basically, images हैं वो मेरे फोन में। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक इमेज जो है 2.5 MB का है। हम्म, तो लगभग लोग 30 GB डेटा को पास करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म, और जो आपने डेटा क्वांटाइजेशन में जो बताया हम्म, कि हम 32 बिट मॉडल में होते हैं, हम्म, और उसको आपने फिर फ्लोट 16 में कन्वर्ट किया, हम्म, फिर एक 3 और बिट 4 में जो हम्म, वेलकम मेथड से आप डेटा ला रहे हो। हम्म, तो हम तो ओवरऑल का जो डेटा है कितना कम हो जाता है, जिससे कि हमारी ये जो लेटेंसी वगैरह वो कम होगी। हम्म। देखो, मतलब जो डेटा सेट है वो ओरिजिनल इमेजेस डेटा है हमारे पास, बट जब मॉडल ट्रेन होगा तो वो इमेजेस नहीं रिटेन करेगा। वो भी रिटेन कर रहा है। मैं वो सबसे पहले बनता है 32 बिट डेटा जो बनेगा ना, जो हमारा फाइटोर्स बनाएगा। उस 32 बिट डेटा में इमेजेस नहीं है, उसके पास सिर्फ डेटा है कि सिमिलर वो किन किन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है, किस चीज को। तो मॉडल इज बीइंग ट्रेन्ड ऑन दैट डेटा। उसके पास एक अपना मेमोरी में वो होगा कि इस अगर अच्छा कुछ ऐसा दिखेगा तो ऐसा, बट वो इमेजेस रिटेन नहीं करता है, पहली चीज। हाँ हाँ, वेट्स रखता है वो अपने पास सिर्फ। और जब हम 32 बिट से इसमें फ्लोट 16 में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा ऐसा मेमोरी लॉस होता नहीं है। इट इज बीइंग टेस्टेड बाय अ लॉट ऑफ बिग एआई कंपनीज एज वेल। तो फ्लोट 16 इज सेफर फॉर द डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस के लिए ही हम फ्लोट 16 और ये सब टाइप्स यूज करते हैं। और जब हम इंट 4 में कर रहे हैं तो देयर कैन बी अ लॉस, तभी हम फिर उसमें कैलिब्रेशन स्टेप करते हैं।
इंट फॉर मॉडल में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो जो ओरिजिनल डेटा है, हाँ उसमें तो क्योंकि बहुत ही कम साइज हो गया, लॉस होगा, तो फिर हम उसको कन्वर्ट करने के बाद फिर कैलिब्रेशन करते हैं उन 500 डेटा सेट पे कि भाई ये हमारा रियल टाइम 500 डेटा सेट है। तो वो उन डेटा सेट के बेसिस पे वो गैप को ब्रिज करने की कोशिश करता है जो वो 60 बिट से 4 बिट पे आने में उसको हुआ। तो उस लॉस के लिए हम वो कैलिब्रेशन स्टेप हमें करना पड़ता है, अदरवाइज जो हमारी प्रिसीजन है वो कम हो जाएगा। उसके बाद भी जो हमारा प्रिसीजन है, हम ये नहीं कह सकते कि जो एक मीडियम मॉडल का और नैनो मॉडल का प्रिसीजन कभी सेम नहीं हो सकता। कितना भी हम उसको कैलिब्रेट कर लें, मीडियम मॉडल उससे बेटर रिजल्ट्स देगा। बट कोई जरूरी नहीं है ना कि अभी मैंने जो वीडियो दिखाई आपको उसमें मेरे को शर्ट का उसका कॉन्फिडेंस 1 है, कोई जरूरी नहीं है ना 1 कॉन्फिडेंस हो, अगर 0.7 भी दे रहा है तो मेरे को पता है ना शर्ट ही है। तो हम हमेशा एक्यूरेसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पीड भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम एक कॉमन ग्राउंड ढूंढते हैं कि यहाँ पे ये अपना ठीक है, ये डेटा मॉडल का साइज भी ठीक है और ये हमारा जो इन्फेरेंस टाइम है वो भी ठीक है। तो तब हम डिसाइड करते हैं कि ये हमारा साइज और ये वो होना चाहिए। मतलब हाँ, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी भी होंगी जहाँ पे वो मीडियम 52 MB का भी पूरा मॉडल यूज करने को तैयार होंगे, क्योंकि उनके एप्लीकेशन में मेन चीज वही होगी। बट हमारी एप्लीकेशन में वो मेन चीज नहीं है, वो एक पार्ट है। तो हम उस एक पार्ट को इतना बड़ा नहीं कर सकते कि हमारी एप्लीकेशन का आधा साइज वो एक पार्ट ले लें। ये अभी 100 MB की एप्लीकेशन हमारी है, 50 MB का मॉडल हो गया, तो दैट इज वे टू मच। हम्म। हाँ, और मैंने डेटा से तब मैंने अपने मोबाइल से हटा दिया। वो मोबाइल में है ही नहीं ना। वो तो मैंने जब मॉडल को ट्रेन करा था तब उस जीपीयू पे ट्रेन करा था उस मॉडल को, वो मेरे मोबाइल में कभी आया ही नहीं ना डेटा से। हाँ। तो आप बता रहे कि कोर एआई इज द न्यू टेक्नोलॉजी। सो अभी ऑन डिवाइस करने में या हम पहले क्लाउड पे जब डेटा भेजते थे तो उसमें ट्रेड ऑफ्स की क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस रहेगा। एक तो पॉइंट में पता है कि मान लो मेरे पास लो एंड डिवाइस है तो उसमें ऑन डिवाइस जो एआई में यूज कर रहा हूँ थोड़ा स्लो होगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप इंटरेक्शन काम कर रहे हो तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन से ट्रेड ऑफ उसको हमें टेक केयर करना पड़ेगा व्हाइल शिफ्टिंग फ्रॉम 4 या 4 फ्रॉम 4 टू 4 ठीक है। तो पहली चीज क्या है ना, अभी अगर हम नॉर्मल जनरेटिव एआई की बात करते हैं तो जो अभी WWDC की नई अपडेट है, तो हमारा सिरी किट जो है अब वो बाय डिफॉल्ट ओपन एआई यूज करता है। तो हमारी डिवाइस पे अब जैसे अब नया एक्सकोड वर्जन है, वो चैट जीपीटी, ओपन एआई एपीआई चैट जीपीटी बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं। तो उनके पास जो आप चैट जीपीटी की ऐप के अंदर सर्च कर पा रहे हो ना मोस्टली, वो सारी चीजें कर सकते हो। बट द ट्रेड ऑफ इज अगर ऑन डिवाइस पे हैं हम और या सर्वर पे है, तो सर्वर पे जो वो डेटा सेट है, वो डेटा मॉडल है, वो ज्यादा ट्रेन होता रहेगा बीइंग टाइम टू टाइम, है ना। फोन पे हमें अपडेट्स का वेट करना पड़ता है चीज़ों के लिए, ओएस अपडेट्स के साथ वी माइट गेट सम रिफ्रेशेस देयर। बट अगर कुछ भी चीज़ हमारी ऑन डिवाइस है तो वो, और ऑन क्लाउड है तो क्लाउड वाली चीज़ें अप टू डेट ज़्यादा जल्दी रहती हैं। बट जो दूसरा ट्रेड ऑफ है हमारे पास इन्फेरेंस टाइम का या क्लाउड लुकअप टाइम का है। अगर हमें हर चीज़ को क्लाउड लुकअप करना पड़े, मतलब बेसिक चीज़ों के लिए, तो हमारा मॉडल अभी भी जो चैट जीपीटी है वो इतना पावरफुल है कि हमारी मोस्टली बेसिक चीज़ें हैंडल कर सके। अभी हमें आप, अच्छा आप नॉर्मल चैट जीपीटी से बात करते हो तो आपको लगता है कि उसको नॉर्मल डे टू डे कन्वर्सेशन के लिए और ट्रेन होने की जरूरत है? वो क्योंकि अभी काफी ट्रेंड है। तो जो हमारा ऑन डिवाइस मॉडल है, फाउंडेशन मॉडल्स है, वो गुड इनफ है हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए। अगर कोई एडवांस रिक्वायरमेंट आती है हमारी बहुत ज्यादा, तो हाँ देन वी नीड टू सी के हमें ओपन एआई की एपीआई यूज करनी है या कुछ ऐसा कस्टम बिल्ड करना है, जैसा ये एग्जाम्पल था। ठीक है। एनीवन एल्स? ठीक है। हाँ। ऑनलाइन कोर्स से ठीक है। इसमें चैट में है क्या? हाउ कैन वी ट्रेन द फाउंडेशन मॉडल विद डेटा सेट मॉडल लाइक द स्क्रम 101। एक सेकेंड। Yeah, Hi hi Manojama. Harsh. Yeah, Hi hi Manojama. Harsh. Yeah, so I think I have missed the initial presentation, or I didn't get the clear picture of how can we train the foundation model. Let's say there are certain things that I need to feed to the data model, right? Related to my company, related to anything.
So how can we train that? And in device, how can we update that? Okay, so फाउंडेशन मॉडल्स वी डोंट ट्रेन, हम उनको ट्रेन नहीं कर सकते. व्हाट वी कैन डू इज, जैसे हम चैट जीपीटी को ट्रेन खुद नहीं करते ना, हम उसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं बना के कि दिस इज द पीओवी दैट यू आर फॉलोइंग और दिस इज द रिक्वायरमेंट एंड यू हैव टू थिंक ऑफ इट लाइक दिस एंड बेस्ड ऑन दैट इट विल गिव अस अ रिजल्ट. Okay, got it. Okay. So let's say if I want to feed FNQ or something, so that he can answer all the question related to the data set. So that we have to add it in a like prompt. We have to give the prompt, right? Then Yeah. yeah, okay, got it. Okay. Next is ऐप क्वेश्चन ऑफलाइन वालों से ले रहे हो. अच्छा. ठीक है. And Harsh, one more thing. So you have shown this clothing detection thing, right? So in that, you used PyTorch and we can use TensorFlow and all, right? Yeah, Right. anything we can use. So when we train the model or when we give the data set to that, so are we exporting something, getting something, and integrating it into our app? Yeah, so we train a model on the data set, then export that into a CoreML model that is being integrated into our application. Okay, is this like a .tf lite or some file, or what is the? Yeah, yeah. Yeah, okay. .tf is also a type of model. We are using .ml package here. Okay, got it. Yeah. We can do the same using tf-lite as well, but we chose YOLO. Yeah. Okay, got it. Thanks, Harsh. Right. जितनी भी फिल्टर वाली एप्लीकेशंस हैं उसमें जीपीयूज एक्सेस इजी है या फिर मोबाइल कैसे है? हाँ, जीपीयू तो हमारे डिवाइस पे होता ही है. तो नहीं, उसको अगर एक्सेस करना, उसकी जितनी भी पावर है उसको. मतलब हम मेटल एपीआई यूज कर सकते हैं. मेटल शेडर मोस्टली जीपीयू पे ही काम करते हैं. तो बेस्ड ऑन अ रिक्वायरमेंट वी कैन बिल्ड शेडर्स एंड वी कैन यूज ऑन. अगर हमें फिल्टरिंग करनी है तो लाइक हाँ, लाइक सबसे मोस्ट डिफिकल्ट. अरे मम्मी, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट. अरे यार, एक मिनट. ऐसे अभिषेक. 1 सेकंड. आई जस्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे हम जो अभी फिल्टर वाली एप्लीकेशन अभी जो हाल फिलहाल में ट्रेंडिंग में है, जिसमें फिल्टर यूज होते हैं, वो क्या एक रियल ऑफलाइन है या फिर वो एक किसी मॉडल पे ट्रेन होके वापस हमको जो शो हो रहा है वो है, या फिर एक ऑफलाइन चीज है? फिल्टर्स के लिए तो हमें, मुझे को नहीं लगता मॉडल को ट्रेन करने की ज़रूरत है. वो तो हमारी ऑन डिवाइस कैपेबिलिटीज इतनी है कि हम इजीली उसको कर सकते हैं. और मान लो इमेज पे कोई फिल्टर है तो वो वी हैव टू डिसाइड कि क्या फिल्टरिंग करनी है. उसके लिए मेटल शेडर्स हाँ, वगैरह का जैसे यूज लाइक करते एक तो मान लें हम कह सकें शेडर्स हैं जिसमें ओपेसिटी चेंज हो रही है, कुछ हो रहा है, लेकिन हैं. जो उसमें ओवरलेज आते हैं जैसे लाइक फूल ओवरले की के हैट लिए वगैरह, बता. चश्मा वगैरह, जो भी है वो. हाँ, तो वो एसेट्स होते हैं. और कंसिडर हमें एक रियल टाइम फेस फिल्टर लगाना है जिसमें फेस के ऊपर एक गूगल से चश्मा कुछ लगा है. हम्म. तो देर एक शेडर होगा जो हम्म. हमें उसका वर्टेक्स मैप और ये सारी चीजें देगा कि हमें कहाँ पे वो चश्मा लगाना है. तो व्हाट विल डू इज कि हम पहले अपने इमेज रिकॉग्निशन के थ्रू उसमें से फेस नेट निकालेंगे. देन ऑन दैट फेस नेट विल अप्लाई दैट. और उसके लिए जो वो इमेजेस के साथ एसेट्स हैं, वो एसेट्स और इमेजेस हैं, वो हमें फिल्टर के साथ होते हैं, हमारे रखने पड़ेंगे. और वो एसेट विल रेंडर ऑन द स्क्रीन. तो काफी वो लो जो लेवल चश्मा है चीज वो है एक ये. इमेज एसेट है बेसिकली, आप समझो. हम्म. हाँ, हम्म. एक मॉडल हो गया इमेज का लाइक. हाँ, एक फिर इमेज एसेट है. फिर उसको फेस मास्क है, उस पर उसको लाइक एडजस्ट करना है. फिर ये एक वो इंटरनल हम एपीआई यूज कर सकते हैं. हमारे ऑन डिवाइस इंटरनल एपीआई यूज करके हम फेस. इंटरनल एपीएस भी होती हैं क्या सर इसमें लाइक? हाँ हाँ, हमारे पास विजन एआई और इनकी जो भी पैकेजेस हैं उनके अंदर एपीआईज होती हैं. विजन के बेसिस पे हम फेस नेट वगैरह यूजर का निकाल सकते हैं.
और उस फेस नेट पे फिर हम वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, और हम मेटल उस फेस नेट पे मेटल रेंडरिंग पास के थ्रू भी हम चीज़ें रेंडर कर सकते हैं। जो न्यू न्यू आप जैसे कुछ क्रिएट करना है वो फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे होता है, लाइक कुछ न्यू जैसे मॉडल्स हैं वो जो बनाते हैं हम, लाइक 3D। ठीक है, मतलब ये यार, हाँ ये बहुत इन डेप्थ डिटेल टॉपिक अलग से है। आप मेरे को लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो इसके लिए। जस्ट आई एम जस्ट क्वेश्चनिंग, आई एम नॉट वी लाइक जैसे हम नॉर्मल जैसे Luckily, we are बनाते हैं। running short on time. We have a lot of sessions in pipeline. लाइक ये एक बहुत काफी एडवांस चीज है। हाँ हाँ, वही वो पूरा सेपरेट टॉपिक है उसका। ठीक है, किसी फ्यूचर सेशन में वो कवर कर लेंगे कभी। थैंक यू सर। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा इतना ही है, भी आई एम जस्ट ए फ्रेशर एंड मैंने काफ़ी सारे चीज़ों पे काम कर लिया, मैंने काफ़ी सारे ऐप बना लिए नॉर्मल जो एक फ्रेशर बना सकता है, म्यूजिक प्लेयर 4-5। अभी मुझे बस लाइक इस फील्ड में जैसे उतरना है, मुझे अभी जैसे किसी सिटी में जाना है जॉब के लिए, तो मुझे मेरे 2-3 पहले स्टेप मुझे वो समझ नहीं आ रहे भी मैं क्या करूँ। तो पहला अपना कोड आर्किटेक्चर पे और उन पे फोकस करो। मतलब व्हेन वी वर्क एज अ फ्रेशर हमें लगता है कि हमने ऐप बना ली, बट वो रियल सिनेरियोज में जाके क्या परफॉर्म करेगी उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो वी हैव टू लुक अप फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, आर्किटेक्चर, ऐप परफॉर्मेंस, हमारी एप्लीकेशन एक नॉर्मल यूआई को कितने अच्छे से हैंडल कर पा रही है, कितना स्क्रॉल्स हमारे स्मूथ है। सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन वी गो ऑन प्रोडक्शन, अ लॉट ऑफ थिंग्स कम्स इनटू पिक्चर। तो उन चीज़ों के बारे में देखो, अपने एप्लीकेशंस को टेस्ट करो और अपना आर्किटेक्चर पे आई गेस सबसे मेन फोकस करके काम करो। ओके, थैंक यू सर। Hi guys, good morning. Okay, looks like the morning is little having a low energy because of Sunday, is it? Let's try one more time. Good morning, guys. Great. So, do I need a mic? Yes. Okay, fine. I will use this. Let me see if it works like this. Is it audible? Okay, fine. So, I'm here to talk about a Google open source project called ADK. Of course, very first disclaimer, it's not Android development kit. It is agent development kit. Anyone heard about it? You heard it? Anyone tried it? Deploy an agent in 5 lines. Simple. Right? Open source framework. Right? Then lot of advantages. We'll talk about it. Right? And how do you, like, I think recently, it's too recent. If I'm not wrong, 21st May, if it has been launched in CloudNext. If I'm correct, right? I'm very bad at history. Right? But anyway, I think it is launched recently with the support of Kotlin. So, and you can deploy it on Android as well, right? So I will be talking about how you build a next gen AI agents. You know, it's all about agentic AI. Right, everywhere, right? And how do you build that sort of agent within Android? That we will be talking about. Anand will help me in terms of doing a demo, right? And I will be talking about, or I will be putting laying of the foundation of what he will be doing, right? Level is intermediate, probably basic plus. I would not say exact intermediate. Basic plus is the level. Before that, yes, my name is 𝗔𝗍𝗵𝗍𝗍𝗍𝗍𝗍. I'm a GD Google Developer Expert. I'm a Docker captain. I started my journey with C programming very initially, having total 25 years of experience. Following disruption, yeah, I early morning every day when I woke up, usually talk to myself saying that I have to follow disruption in IT. If I don't follow disruption and disruption follows me, I will be going out from this market. Right? You know, we all will agree that in IT, it's all disruption. Even in mobile, in every aspect, but technically disruption change is everywhere, but the way how it is happening in our field is very fast. So I keep learning new things. I accept new challenges and trying to do justification with those things. So I have a hybrid profile coming from an infra, dealing with AI, ML, OpenShift, lot of stuff.
But yeah, apart from that, I am a trainer and a consultant also. I'm a Google authorized trainer, Red Hat certified instructor, and 𝗔𝗫 certified instructor as well. Coming to a point, ADK, Agent Development Kit, as discussed by Google, of course, open source. I think Google was not having this mindset earlier. So Google had recently, not recently, but yes, Google had launched Agent Development Kit to build and deploy agent in an open framework, right? In an open source. Google had one more thing which is open source. Anyone heard about it? Yes, it's Google Gemma, which is again open source, right? I will talk about that also. I will try to touch base on what exactly Gemma is. Having said that, yes, you build an agent using an ADK framework. When I started learning this ADK, it was only on Python initially. So it launched in Python. Now it supports TypeScript, Go, Java, and of course, recently the Kotlin support, right? So let me. We will be talking about what is an agent. I don't think we need to spend much time on that. Then we'll talk about what is ADK, the architecture of an agent or ADK stuff, right? Then, of course, Kotlin, Android, and Gemma connection. There we'll try to understand some agent-to-agent protocol as well. And of course, last is how you build and deploy, right? So yeah, that's what we will be covering, a short presentation on it. So before that, maybe a sidetrack slide. Google had a product. Google has a product called conversational or customer engagement suite, under which they are having conversational agent. Now I had added a star here, yeah, that I don't forget usually when I use this slide. This slide is little old. The reason is Google keeps naming convention updated. Right? We all know that. Fine. So the conversational agent is now CX Agent Studio. Right. So how I justify this is very interesting concept which most of the organization follow. Right. Just to give an example, you might have heard about Linux. Right. What is Linux? Very great, very good. I usually get that answer. Right. But it's not operating system, it's a kernel. Right? It's an open source kernel where on top of that kernel operating systems are built. Mostly open source. But logically, this is known as upstream. From this open source, there are organizations like Red Hat and 𝗔𝗫 who build their own operating system and sell subscription. Right? Same way it happens here. It's very simple. It's like a Bisleri bottle. You buy 20 rupees Bisleri bottle, right? Of course, where the water inside the bottle is technically free. So water is open source. The Bisleri is enterprise. We trust enterprise, right? Same way, ADK is open source. The CX Agent Studio, which is rebranded. So earlier it was conversational agent. CX Agent Studio is technically an enterprise application, an enterprise platform. So underlying layer is of course ADK, but Google used that ADK to convert it to a full-fledged product. That's what organization can do, right? Where you can use ADK to make your own agents at an enterprise grade scale, right? But this tool is to create an agent using a console. So if a management guy wants to create an agent, he can create or she can create using just a console. Underlying layer is ADK. So it's a service. It's a Google service which helps you to build and deploy agent in a simpler manner, as in product. That's what the Google had taken an advantage of ADK, and that's how the products are. So just a quick example: when you go to Indigo website and you started chatting with the agent, right? So agent has two types: generative and deterministic approach. So whatever the approach you are following, if you are asking about information or if you want to book a ticket, then it is deterministic. If it is informative, it is just a generative answer. So these things, this conversation agent can help you to build. Right? Again, underlying layer is ADK. So how the ADK works? It has majorly three components. Right?
This will help you to understand when you try to implement this in any sort of manner. So a user will talk to an agent which has an orchestrator, right? Where I have something called agent brain. Agent brain has very simple thing, which is nothing but a profile and goals. That's where I usually tell people that you can run and deploy agent in not more than 5 lines. You can write 5 lines and you can get your agent. Where profile and goals, you simply say that who are you, what is your job, that's it. And you can run the agent. It will start working in a seamless manner. That's what the agent brain is. And of course, every agent has a short-term memory and long-term memory. Right? I can use variables, I can use data store to get through this long-term and short-term memory. One most important factor is here, the model-based reasoning, right? So it does react, reasoning and action. So every LLM has this approach where it does reasoning and action for my user input, right? That's what the orchestration is. And of course, it is deployed in with the help of what? The LLM models, right? Which LLM model you guys are aware of or heard about or using? Any LLM model you're using? Claude, okay. Gemini. It's all are public models you guys are talking about. No. It's all public, right? Yes. Okay, fine. No worries. So I can use any of the model. That's what the point is. So that's where ADK comes with a feature called model agnostic. It's not like that you have to use a specific model. You can use any model as per your convenience or as per your convenience, whatever, or maybe some compliance issue, whatever. Right? So that's the best part of ADK. Then we have tools. This section helps me to bring the RAG model into the agent. Right? For example, I am an internet service provider company, right? And I have my plans, plan details, subscription details, whatever, in one PDF. So what I can do is, as in database, I will upload that on a bucket or storage, whatever I want to upload it, right? And I will tell that whatever questions user asks, right, do a scrapping of this PDF and answer. So that's the, data store or data source for that agent. These are the tools. Even it can have an API. It's not about a PDF. I can have a website. Let's say I want to pull the dollar rates. So of course, it cannot be in a database. Right? So I have to call an API, or maybe I want to integrate something with my Google Map. I can do that using something called this tools. So it can be API functions, database, data stores. In terms of database, we have a lot of sources. It even supports Google Drive. So if my data store or database is in one Google Drive folder, it can scrap that. 𝗕𝗵𝗇, SQL, NoSQL, JSON, right? JSON line, any sort of data store, it usually supports. Right? That's the best part of it. And then again, it can be agent also. Right? So the agent, so here is a use case. I can have multiple agents. Right? So I think I built one small project for my daughter. She is in 8th standard. So I built a tutor. So first of all, why I need an agent for my daughter? Right? One day I found that she was using Gemini, right, to have her doubts cleared. Now the problem, I would not say problem, the vastness of Gemini or any LLM model is, it goes and scrap lot of sources, probably website and probably some other blogs or whatever, and then it basically get into a summarized way and then displayed as a result. Agree? Sometimes you also found that whatever I need, it has exaggerated or maybe it has more content than what I was expecting. So maybe the level of the output I needed at a, let's say, basic level, it gave me advanced level. So मेरे को जो सीखना था, मैंने बोला ये इतना hard है, मेरे को पढ़ना ही नहीं. That happens. So point is, it does not have context.
कौन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, what is his or her background and whatever. So what I did is I built an agent, maybe a root agent, then I will build a physics agent, maths agent, right, whatever subject she has. And I took help of NCRT, she's in CBSE. So I took help of NCRT website. They had a PDF uploaded. I just gave that as a source and given a lot of configuration and prompts saying that whenever you give an answer, make sure that you have to use this as your thumb rule, as a SOP. That NCRT book is her SOP. Accordingly, she is getting answer. Because earlier what was happening is she was getting into a confusion mode, saying that what my tutor or what my trainer taught, a teacher taught in the school, and what I am learning or what Gemini is giving is maybe different, right? So then it got that psychology कि नहीं उसको कहाँ से लाना है, तो PDF से ही context लाना है. So that's how where I built multi-agent platform. I have a GitHub of that also. It's open source again, ADK. So that's how I build a multi-agent platform. So point is, agent can talk to another agent also. So I can have multi-agents and I can pass on those communications and all that. Best part is you can escalate to the human also. So lastly, it summarizes everything and then it will take you to the human agent. That's also possible. Yeah, that's the quick aerial view of ADK. So, of course, what is an AI agent? What happens is it reads an input. You being an user, let's say user will come to an agent and give some inputs, output. It decides reasoning. This is what I was saying. Remember, reasoning and action, react. Now, this can be a loop in most of the cases if it doesn't comes to a conclusive state, right? So it decides which LLM has to use or what, then call tools and respond. That's what the logic is. Traditionally, I have to write it in a hard code manner. Right? I have to write my own program, probably a Python or whatever logic I want to build. I have to write a code. But nowadays, you dynamically create it in a couple of minutes. That's the AI agent. Now, advantages. Why ADK? Or what's the logic behind ADK, right? So without ADK, I have to build custom tools, error handling, right? Custom tools means source. In a normal scenario, I have to tell that go and do a Google search, use this Google Drive, use this Firestore, whatever database I want to use, right? Ideally, ADK has a built-in execution for this, right? That's the best part. Agent memory and session management is one of the difficult tasks. Session ID. We all, being a developer, we all know what exactly the session ID and what's the importance of, right? Imagine a case that there is no session ID and one need a payment and it got reflected in another user, right? If there is no session ID. So of course, that is again integrated in ADK. It does session management, state management, right? And out of the box integration also. Multi-agent orchestration is not there in a normal scenario. As I said, ADK has that, right? Then again, logs, metrics. Additionally, which is a feature which is not here, I can have my conversation history. I can store it. I can compare it. I can run the test cases also. That's an additional feature of ADK where I can tell that, okay, cool, 10 customers had a discussion and now let's see the QA of it. Quality analysis of it. That is also possible. That's the best part. I was telling that even in the slide, the last point, you can see that it is compatible with multiple models, Gemini, Claude, LiteRT, Llama, Light LLM. So that's where I concluded that it is model agnostic. Correct. One more thing nowadays is it's not only model agnostic, it is platform agnostic. You can deploy it in Cloud Run, right? GKE, now on Android also, of course, and on a bare metal. Even I can deploy it on my laptop as well, where you can deploy it in a dedicated server. So ADK is model agnostic, platform agnostic, and cloud agnostic. That means it's not
necessary to deploy it on Google or any specific cloud. You can deploy it on any cloud. That's the best part of ADK, what we have. A quick architecture of ADK. We have a model layer at the top, which is Gemini, Gemma, whatever you're looking. It has agent core, which has memory, sessions, callback. I had not taken a detailed deep dive of ADK. ADK has inbuilt 7 to 8 components. Session ID, memory is two of the components out of that side. Okay. Then orchestration is there, of course, how you want to deploy, sequential, parallel. Then, as I said, logs and deployment layer. So yeah, this is actually a deep dive of the architecture. The best part is how do you interact or how do you create this ADK? It supports UI. This is very interesting. ADK comes with its own UI. You don't need to have your customized UI, right? Then CLI and API. So I can integrate with my third-party software as well. Yeah, then ADK runtime is there, and then this is what agent system is, and then the foundation layer. I was telling that 6 to 7 components. These are the components. And as I said, the whole stack is created using ADK called Customer Engagement Suite. So Google has a product called CES on top. Yeah, let me take a pause here. Any question for me? All good? Are you with me so far? All good? Anything you want to ask, or even anything you want to add it to open for? Are we going good? Yes. Okay, cool. So yeah, that's the ADK architecture. Yeah, this is what I was telling, that these are the core components of ADK agents. The brain, where you define a model, instructions, tool, then functions. In tools, I can have functions. One of the hot product or hot topic is MCP. So I can use MCP as a tool in ADK for sure, right? Which basically reduces the latency and the end user efforts to connect. Right? I hope everyone heard about MCP, right? So MCP can have different, let's say I have a different databases, Cloud SQL, Cloud Storage, Object Storage, JSON, lot many databases. Each needs separate configuration. Rather than using each of them, I will be using MCP, which will help me to, it's like a single point of contact. Right? You took a admission in one of the college and you have HOD who is a single point of contact. Whatever happens, you will go to that HOD person. Same thing is MCP, which is technically configured, can be configured as a tool. As I said, session and state management is also there. Artifact, callbacks, callback and fallback. I don't know why I missed to add a fallback. It has a fallback also. This is very interesting, right? If you ask something out of the context, right, what will happen? So it has a fallback mechanism and callback also in terms of dealing with the validations and custom logics. Then memories, as I said, long-term and short-term memory is also there in terms of core component. Yeah, these are the types of agent what we have, where you define a sequential agents, loop agent, parallel agent, and graph work. The one which I was talking about, a small project which I did, is that parallel agent. What I did for my daughter, I had built that multi-agent scenario with a parallel. So you were parallel agent, parallel multi-agent ecosystem. Right? That's what I did. Yeah, that's how the agents are. Cool. Now, a most important problem. We all know that, right? अच्छा, how many कितने लोगों के पास cloud का subscription है? कुछ लोग बहुत पहले नीचे हैं. I need your login details so that I can also use your cloud. But jokes apart, how many of you heard about that? Now companies are fed up of paying the LLM token cost. How many of you heard about that? अच्छा, कोई अभी news सुना है? I heard cloud subscription.
क्लाउड, ओके, माइक्रोसॉफ्ट और उबर का ये सबसे इंटरेस्टिंग था जो मैंने भी पढ़ा है कि 12 महीने का उनका एलएलएम का जो टोकन का जो बजट था 4 महीने में खत्म. Starbucks, yes. So lot of things, right? And I think every other organization has that concern कि भाई, of course, public LLM में use करूँगा तो cost का क्या? And budget, अभी recently, correct me if I'm wrong, Co-Pilot ने भी वो कर दिया ना, क्या नाम है? वो बंद कर दिया, student subscription जो भी था वो, correct, बराबर ना? Co-Pilot is also stopped there. Maybe I might be wrong, but कुछ तो सुना है मैं. But हाँ, point ये है कि public LLM costly. अच्छा, costly again. I want to run it. I need a hardware cost. I did a lot of things. Dollars, both. What is it? Fast pace से क्या होने वाले और बुरे burn वाले. You never know. जिनके पास क्लाउड का सब्सक्रिप्शन नहीं है उनको भी पता है कि वो 3 या 4 बार ही तुमको, राइट? सो इट इज बेसिकली अ लिमिटेशंस इन टर्म्स ऑफ टोकन, क्योंकि उनका भी तो हार्डवेयर है, राइट? सो आई थिंक ये सबके साथ होने वाला है, डोंट वरी. ये जेमिनी भी और चैट जीपीटी भी, अभी इमेजेस भी फ्री में बना रहे लोग, बट डोंट गेट सरप्राइज इफ दे विल स्टार्ट चार्जिंग ऑन दीज प्लेटफॉर्म आल्सो. ऑफ कोर्स दैट इज हाउ इट वर्क्स. सो इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल कंसेप्ट है. आई गिव अ टाइटल कॉल्ड एंड्रॉइड विद एडीके, बट मेरे लिए इफ यू आस्क मी honestly, Gemma. It's like Gemini. People says that running Gemini locally without internet is Gemma. Just to clarify. तो आपको अगर आपके लैपटॉप पे भी ये सेशन के बाद रन करना है तो ओलामा रन इंस्टॉल कर लो आपके लैपटॉप पे एंड उसको खाली सिलेक्ट कर लो, Gemma यूज कर लो. तो Gemma is a model which runs locally. बेस्ट पार्ट, ठीक है? कितने लोगों ने सुना था, ये पता था Gemma है ऐसा कुछ? अच्छा, चलो great. So I think I'm glad that I had added this slide. I was not supposed to talk about this, but मुझे लगा कि नहीं यार, थोड़ा सा अपन लोकल रन टाइम पे भी बात करते हैं. तो as discussed, OpenWeight LLM family, again coming from Google's stuff, open source, right? Yeah, publicly available. Model sizes, Gemma 2B, 7B, right? 27B. These are the model sizes. I think based on your use cases, you have to select the model, right? कि भाई अगर text ही generate करना है या text plus image generation है, तो you can select. So I will suggest go to Gemma official website. There you will get dive details of which model, when to use, and why. Okay. Then again, ADK integration, you can use Light, RT, LM or Media Pipe LM to deal with this interface. Now, there are a couple of things. If I want to run it on local machine, as I said, you can deploy or install Ollama, and then run with the Gemma. If I want to use ADK, these are the ways of doing it. If I want to use on my laptop, I can even use Docker. I can use something called, there is a service in Docker desktop अगर install करोगे तो DMR नाम का service है, Docker model register, Docker model runner, right? So you can run your model, that is Gemma, on your container also, more lightweight fashion. So yeah, that's the Gemma. Then what are the key capabilities? Of course, we need to say on-device inference, run on Android GPU and NPU, right? I think it's not about only Android. Even on my laptop, I can run, if I use DMR, right? It can go and connect with the GPU of my hardware using something called NVIDIA Container Toolkit. So that's the, again, open source project which has done by NVIDIA. Then privacy, again, compliance. See, मुझे लगता है cost वगैरह सब बाजू में छोड़ो. सबसे important, अच्छा, कितने लोगों ने ये देखा है कि मैं अगर कोई भी जैसे जेमिनी ले लो या क्लाउड ले लो, मैं जब साइन इन कर दो पूछता है ना, you are telling that your data is shared. By agreeing, you are telling that, or we will be using your data, you are aware of it. ऐसा कुछ बोलते हैं, right? Data तो share हो रहा है, compliance. Organization
see, थोड़ा सा ऐसे लेते कि there is a company who manufactures medicines, ठीक है, or there is a financial analysis happening, data analysis, और उसके ऊपर वो कुछ LLM यूज कर रहे हैं, implement कर रहे हैं, and of course they want that has to be maintained in a private manner, compliance manner, correct? In that case, public LLM is not an answer for sure. Forget about cost. So that's where the 𝗔𝗫 comes in picture. Privacy, offline. मतलब I don't know how many of you are aware of कि ऐसे कई सारे scenarios हैं जहाँ पे VPN through ही हार्डवेयर कनेक्टेड है. Maybe on a lighter note मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि जो वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट आया था कोविड में, ठीक है, किसी के घर पे आसपास या किसी के घर में कोई बैंकिंग वाला बंदा है जो कैश हैंडल करता है, कोई है, या किसी कोई दोस्त वगैरह होगा ना जो बैंक पे काम करता नहीं है, तो उसके घर पे लोग आते थे पैसा निकालने कोविड में, नहीं ना, ऑफ कोर्स. पता है क्यों नहीं आते थे? क्योंकि वो उसके पास भले लैपटॉप हो बट वो कनेक्टेड नहीं था इंटरनेट से, वीपीएन था. अगर वीपीएन से कनेक्ट है तो इंटरनेट का सवाल ही नहीं आता, राइट? इट हैपेंस इन एवरी लॉजिक. जस्ट टू ऑब्जर्व, कभी भी बैंक के छत पे जाओ ना तो एक बड़ा सा सैटेलाइट लगा हुआ है, दैट इज जस्ट अ वीपीएन टेक्निकली, राइट? So if I do this way, if I deploy my application via access has to be done via VPN, I can use this offline. That's the best part. Zero API cost, public API consume ही नहीं हो रहा है, तो cost का तो सवाल ही नहीं आ गया, right? So it's a zero API cost. Then what are the use cases of my 𝗔𝗫 on the Android scenario? Again, smart and compose autocomplete, accessibility assistant, healthcare and sensitive data. This is what I was talking about, right? If my data is sensitive, of course, I need a way, I need a workaround to get read from the public LLM, right? Then on-device RAG, this is very interesting, right? I can have one minute. We phone करते 5 minutes. Sorry, that was my mom, so I can't see my thoughts. So on-device RAG, so PDFs. So as I said, कि मेरे मोबाइल पे ही कुछ PDF है, उसको मुझे RAG से यूज करना है, लैपटॉप पे है, लोकल हार्डवेयर पे, तो I can use that. Then I can use use it as in mobile code assistant, right? And offline transaction. This is very interesting. These are some use cases of 𝗔𝗫, right? Cool. So yeah, what I covered so far is, one is ADK part, right, which is model agnostic, platform agnostic, and cloud agnostic. Second is the 𝗔𝗫 part, which is running LLM locally. Cool, right? Any question? All good? Sure. I think I am near to complete my slides. So why, or what's the logic behind ADK and Android stuff? So as I said recently, it supports the Kotlin. Kotlin support has been added. Then open device AI and light RT is also there as a feature. Agent to agent protocol I can use as in mobile developer. That's the best part. And Google native. So that's another advantage of dealing with the Android as an Android developer, right? So I think 2B and 7B is a model good fit for Android because of the size, right? Because of the lightweight use cases and latency scenario, both. How to implement? I think Anand will put more focus on this, even doing a demo. So this is how you can implement couple of stuff. So the one I was talking about, can you see that instructions? So instruction has only one line. So this is an example where you configure agent in 5 lines. You don't need more code to be pulled, right? That's the best part. Just export the API key and then do ADK web or ADK run, whatever you, right? Key features are, of course, core routine and suspend functions. Typestep DSL builder is there. Kotlin data class for state is also there, and work with Ktor and retrofit.
right? That's the best part. Yeah, then you can use it on-device AI with light RT, right? This is where the Gemma again, right? So I like running models, LLM models locally apart from running it on a public stuff. That's why I added this, right? Offline ready, privacy first, and no API cost. I think, yeah, that's it. Last slide probably, where I can deploy, right? So I can deploy it in a container. I can deploy it in a GCP service cloud called Cloud Run, serverless. Then I can deploy it in a Kubernetes orchestrated way, that is Google Kubernetes engine. I can run it on agent, which is a Google model. So I can use so Google has a console which is an agent console where I can deploy it. And last is, of course, on-device, right? And then again, as I said, it comes with a lot of features, metrics, logs, trace. That's it. Yeah, I think, yeah, just in case if you want to learn more about all this, what I presented, I use these websites as a source. And that's how I created this slide. So it's all about ADK. So adk.dev is the right place to get started with. Right? So please use these sources. And yeah, that's it from my end. This is my LinkedIn profile. Open for the questions if you have it. I hope I had not taken much time. I don't know how much time I have taken. So any questions you can ask with the user. So I will be share demos. Okay. So after the demos, so you can ask the question. After that, okay, no worries. So we will be taking questions after. Great, thank you. With this, You can. I will stop. Scan the. Yeah, I think that's that. बंद कर दो. Stop. Disconnect. सो मीट खर्चा AI का मैंने यूज करके एक डेमोस बनाया है ADK का यूज करके. पहले एप्लीकेशन में आप टैप करते थे, फिर आप रिपोर्ट ऐड करते थे, तभी वो
सारे डेटा कैलकुलेट होते थे, आप अपने एंड्स पे कैलकुलेट कर रहे थे। अभी हमने एजेंट्स का यूज़ करके, आपका 25,000 का बजट है तो आपने 18,400 रुपये यूज कर लिया, आपने किस कैटेगरी में फूड में ऐड किया है, आपका कितना जिस हिसाब से आप ऐड कर रहे हो उस हिसाब से चल रहा है, तो एजेंट्स आपको बताएगा। तो इनसाइड द खर्चा है, यू कैन द सेट द गोल्स, यूजर आस्क द plain language and think that agents plan which tools to use, act like did your sums transaction all that you have entered, and answer the clear personal insights like आपने जो ट्रांजेक्शन ऐड किए उसके हिसाब से वो आपकी रिप्लाइज करते हैं और उसके हिसाब से सजेशंस करता है, सो दैट वी यूज द these things in the खर्चा है. So we have used the AI agents and they also be used for the on-device first cloud only if needed. Like I have used the cloud and AI agents both. Okay, so I will be presenting some demos, so you can check that for that. So this is the applications. So if I am asked the anything in that applications, so related my transactions, so that we are agents will be the working on that. So you can also be check on that in the demos.
एजेंट सर्विस डॉट के टी का मतलब है कि यूआई सिर्फ इससे बात करता है, लाइक ये डिसाइड करता है कौन सा इंजन जॉब देगा, लाइक रियल एडी के, लाइक ऑन डिवाइस नैनो और क्लाउड जेमिनी। ये ऑफलाइन फॉल बैक जब कोई मॉडल अवेलेबल ना हो तो ताकि एमुलेटर में भी डेमो चल सके, तो दैट विल डन सेम एजेंट इवेंट स्ट्रीम डेटा देता है, इसलिए स्क्रीन आइडेंटिकल रहती है और स्टेटस बताता है अभी ऑन डिवाइस चल रहा है या क्लाउड। सो दैट विद लाइक एजेंट डॉट ए डी के एजेंट डॉट के टी असली ए डी के एजेंट है जो एल एजेंट्स बनाता है, रिजॉल्व मॉडल के साथ यूज खर्चा टूल्स बॉक्स के टूल देता है और इन मेमोरी रनर से चलता है। थिंक एक्ट लूप एंड टूल सिलेक्शन और ऑर्केस्ट्रेशन एंड सब एडी के खुद हैंडल करता है, हम हाथ से नहीं चलाते हैं, हम बस फिर फाइनल आंसर स्ट्रीम करते हैं और टूल्स कॉल करके हमें लाइव दे देता है। सो दैट विद द दिस थिंग्स एंड डी के मॉडल्स लाइक मॉडल रिजॉल्व करता है पहले ऑन डिवाइस जेमिनी नैनो चलेगा वरना क्लाउड जेमिनी नैनो, डिपेंड ऑन द हम क्या कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, हाइब्रिड कर रहे हैं कि लाइक कि ऑटो है, तो उसके हिसाब से वो खर्च करेगा। Hello everyone. Am I audible? Yes. Okay. So how are you all? कैसी लग रही है अभी तक टॉक्स? गुड. नींद आ रही है? एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद हिंदी एंड इंग्लिश? कोई ऐसा है जिसको हिंदी में प्रॉब्लम हो? हिंदी में पूछ रही हूँ. वाओ. इज देयर एनीबडी हु इज नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी? ओके, एवरीबडी इज कंफर्टेबल. ओके. बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस के बाद लेट्स स्टार्ट. Zoom पे वॉइस नहीं जा रही है. इधर से कर। Okay, so let's talk about how you can create generative interfaces
with Flutter's GenUI SDK. So I'm going to just talk about a little about me. I am Akansha. I'm currently working as a senior software engineer at Firebase. And I'm also the organizer of a few communities, Flutter Delhi, FFDG New Delhi, Flutter Developer Groups New Delhi, and I also organize some large-scale events like FlutterConf India. Have you heard about FlutterConf India? Okay, that's great. So, first of all, do you know what's GenUI? Generative UI. बात तो सही है. But what is generative UI? According just like in for the user perspective, so we are rendering the UI dynamically rendering. Dynamically rendering UI. Okay. So dynamically और generative में difference क्या है? Just like for example, right, we are controlling frequently I just bind up few things only, right? So what should be my UI? So let's say first of all मुझे कोई suggestions आने चाहिए कि तो मैं identify करता हूँ, right? अगर वो out of stock है या फिर उससे कुछ test पर इनके कुछ available है हमारे stock में, so that should be the next like that. But it's a journey नहीं? ये तो journey हो गई ना, ये तो normally जैसे हम apps create करते हैं तो हम journey create करते ही हैं. But you know what's the difference? So let's say if one point of view, so you know, if we are creating the journey, so that is radical. So like slider आएगा, then उसका grid आएगा, then उसके बाद list आएगा, कुछ और components आएंगे, right? But this is the generative in terms of generative. So content will be dynamic. Like sliders जो आएंगे, so slider हमें कब दिखाने हैं, and किस कौन से slider दिखाने, like जरूरी नहीं है कि स्टैटिक मतलब स्लाइडर नंबर 1 पर आए या फिर हो सकता है कि कुछ एक ब्राउजर दिखा रहे हैं तो ब्राउजर को हम स्लाइडर में कन्वर्ट कर पाए लाइक दैट. Okay, there is a difference. I'll tell you what's the difference. But first, कितने लोग यहाँ पे Flutter developers हैं? क्या बात है भाई, Flutter की ऑडियंस देख के मुझे बड़ा बढ़िया लगता है यार. Nice. So this talk is for you. If you have been building with Flutter, if you have added an AI feature, किसी ने किया है, irrespective of Flutter, have you added or integrated any AI feature in your applications? Mobile developers कितने हैं यहाँ पे? सभी होंगे भाई, नहीं वेब वाले भी आ जाते हैं भाई. अब आपने एंट्री नहीं दी तो बात अलग है. मैंने बहुत सारे को एंट्री दी. राइट, ओके. सो किस किस ने AI फीचर्स इंटीग्रेट किए हैं अपनी ऐप में? कोई बताना चाहेगा क्या इंटीग्रेट किया है? For my yoga app and like chat, basic chat bots, and sometimes the learning model. Some machine learning models like PowerPoint detection and like plant detection. Okay, that's great. ये तो बहुत सारे फीचर्स इंप्लीमेंट करके बैठे हैं भाई. और कोई? ओके, नो प्रॉब्लम. किस किस ने ऐसी वेबसाइट्स देखी हैं जहां पे लाइक लोअर राइट में ऐसे चैट बॉट्स होते हैं? अब तो सब जगह ही होते हैं ना. इफ यू आर बुकिंग फ्रॉम एन एयरलाइन और समथिंग, लाइक वी हैव इट. बट क्या होता है व्हेन यू क्लिक ऑन इट, लाइक you are chatting with the AI, right? It's like that. You are typing something and the AI is responding something in the form of text only, right? Cool. This layouts, like this builds the whole, GenUI thing. I'll tell you what GenUI basically is. So we want our model to do things more than, just chat, right? मतलब भाई मैं सिर्फ चैट कर रही हूँ एक मॉडल से. दिस इज नॉट व्हाट आई वांट, राइट? व्हाट आई वांट इज actually generating UIs. So basically my model will generate UI. Okay, this is what I want. And I'm going to tell you like how. Okay, so this I already talked about. You have seen that there is an airline chatbot or something. You're just typing with the AI. This is a traditional method, okay? So you're just chatting with the AI. The AI is responding you in tons of text. Okay? But what we want is, we want something like this. कि जो AI है ना, वो खुद ही interactive widgets generate करे, so that we can interact with those widgets rather than typing stuff out. So
You ask a question to the AI or the model, you get back text, you still have to read it, decide and then interact in the form of text only. यही हम ChatGPT के साथ भी करते हैं ना? Cool. But what if the model could hand you the screen and not just describe it? So you are building your widgets with the AI. इसे साथ में बैठ के, it's like that. But how is that going to happen? So we were talking about user journeys, right? For example, you want to buy something from Amazon. For example, you are looking for comfortable shoes, comfortable running shoes from Amazon. अब क्या करोगे? Amazon.com पे या Amazon.in पे जाओगे and then वहाँ पे type करोगे कि I'm looking for some comfortable shoes or something. And then the next page that will open is a product catalog, right? Product catalog में you will see कि okay, these are the brands I'm looking for. You will filter based on that. And then what you are going to do is जब आपको कोई एक shoes पसंद आ जाएगा जो दिखने में अच्छा होगा, you are going to open the product page, you are going to see the reviews and everything. अगर पसंद आया, आपके budget में है, so you're going to check out and just buy it, right? So this is a whole user journey. But now with GenUI, what you can do is you can just ask the AI, hey, I have a golf lesson this weekend. I'm looking for, specific golf dresses or something, or specific golf outfit. So can you just help me buy one? And then instead of, giving you in the form of text, कि यहाँ से खरीद लो, etc., it will give you interactive widgets in the form of cards, chips, जैसे आपने filter create किया था Amazon में, right? So in the form of that, आपको chips भेज रहा है AI, राइट आपका जो मॉडल है, जो भी जिस भी मॉडल से आप बात कर रहे हो, वो आपको चिप्स भेज रहा है एंड उसमें वो आपको फिल्ट्रेशन के लिए पूछ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ आउटफिट यू आर लुकिंग फॉर. Is it a sunny day? It's a rainy day? What is happening, right? Then based on that questions, okay, you are going to interact with that. You're not typing something, you're just interacting with those chips, those cards, okay? And after that, the AI generates, the response again in the form of interactive widgets rather than text. This is what generative UI is. So generative UI is just the model which is building the interface for you rather than, just typing something out and giving results in the form of text. So instead of replying in text, the model assembles real interactive widgets in the form of cards, chips, forms from your own design system. अब ये बहुत important है. From your own design system, from your own brand guidelines. What do we mean by that? So you're going to provide a widget catalog. Abhi, I'm just giving you a high-level overview of what it is. Okay, but for example, you have a database जिसमें आपके पास पूरा data है, okay, and you have some, widgets. If you have been working with Flutter, you know what widget is, right? So widgets are just interactive elements or the basic building blocks that you see on a screen. So this is a customization basically. So you are not chatting with the model, you just gave a prompt to the model that, hey, I'm looking for some comfortable running shoes. And then it will give you, it will either ask you questions or it will just, give you, if your prompt is so detailed, then it will just give you, okay, this is what you have been looking for. You can just buy it from here. So they get a screen to use and not a transcript to read. They means the user. So now let's talk about Flutter GenUI SDK. It's an experimental package. If you have been working with Flutter, you know we have a lot of packages, third-party packages on pub.dev. So GenUI is again a package, which is an experimental stage, and it will build interactive widgets at runtime rather than compile time. Okay, for your own brand only. और जब भी मैं ब्रांड की बात कर रही हूँ या फिर मैं बोल रही हूँ फ्रॉम योर ओन डिजाइन गाइडलाइंस, आई हैव क्रिएटेड अ डेमो, आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट आई एक्चुअली मीन बाय दैट, बट जस्ट कीप इट इन माइंड कि आपके खुद के विजिट्स, आपके खुद के डेटाबेस से ही द एआई मॉडल इज गेटिंग ऑल द डेटा एंड इट इज शोइंग यू ऑन द स्क्रीन, बट इट इज थिंकिंग ऑन योर ओन, लाइक थिंकिंग ऑन इट्स ओन कि मुझे किस टाइप का इंटरैक्टिव विजिट भेजना है. ओके, सो इट्स स्टिल एन अर्ली स्टेज right now. So these are the three ideas. I talked about widget catalog. Widget catalog is nothing. आपके पास एक catalog है जिसमें बहुत सारे widget हैं and we call it as catalog items. Okay, it's a contract basically जो आप अपने model को provide कर रहे हो. Second, it returns JSON and not code. And abhi I'm going to talk about why JSON and not code. So the model is describing the UI as a data, okay, and not code.
Then interactive loop back, I'm going to talk about it in the next slide. Just keep it in mind that you have a catalog widget, you have a JSON, and you have an interaction loop. But why JSON and not code? JSON is because it's safe. The model never runs the code on your client. It's not executable. It's just data in a format, right? JSON is just a data in a format. Then it's native. The JSON is mapping to your own native widgets. Okay? It can be either Flutter, a React, Angular, any native widget. So your fonts, spacing, theme, everything, it looks like your app because it is your app, okay? And I'm going to show you like how we are going to create the widget catalog and how we are going to create the interaction loop. Then JSON is streamable. So whenever we have a JSON, it arrives piece by piece, okay? So we have time for the UI to build. And it is not platform agnostic. So any model you can use, not a single model. Like I'm not talking about Gemini or Claude, like not in like, oh, sorry, Opus. I'm not talking about a specific model. You can use any model and you can use any front end. I work with Flutter. That is why I'm talking about Flutter GenUI SDK, but you can use any native platform you want. You can use React, Angular, anything. So now let's talk about A2UI. Do you know about this protocol? Agent to UI. So what this protocol is, it creates a trust boundary, okay, between the model and your app. And this A2UI is nothing but a declarative JSON. For example, मैं आपको app से समझाती हूँ. So I created this app called Sage, and it's just a cooking assistant, nothing else. And you can just ask कि मेरे को आज पनीर खाने का मन है, या मेरे पास पनीर की सब्जी है, या मेरे पास पनीर है खाली, तो मैं क्या बना सकती हूँ डिनर में, okay? I'm just going to show you the demo first. So see, I'm just typing something quick with paneer for dinner. Now the model is thinking, I'm using Gemini 3.0 Flash Lite. And then it asks me what ingredients do you have available, okay? So I just told it like, I just interacted with these widgets. Now there is no text. We have text, but we have interactive elements. So the model is specifically asking me, what ingredients do you have? Do you have anything else other than paneer? So I told it like, yeah, I have onion. And then it asks me, how much time do you have for cooking? So I just told it like, I have 20 minutes. And then I just clicked on this interactive CTA called Show Me Recipes. So now, once I click it, the model is again going to think and show me the recipes based on the data that I have shared with it. Now it's showing me paneer bhurji or tomato paneer masala and stuff like that. So for example, I click on view recipe for paneer bhurji, and there is a feedback as well. If you see on the top, it says selected paneer bhurji. So we have a UX for the user to understand what the user has clicked on. Now it gives me a recipe of paneer bhurji. And if you see, we have all the interactive elements here. For example, paneer, onion, tomato, green chili, whatever we need for this recipe, and then detailed steps for it. And there is one more thing. It says, do you want to adjust this recipe? So I make it, like I told it that please make it more spicier. Now it has adjusted the recipes, and it has again given me, the card where it shows that, okay, I have added more green chilies and now you can do this. Now I'll ask the AI to give me a fewer steps because I'm lazy to, go through all of these steps. So it gives me now 3 steps to make paneer bhurji. Right. But if you see, these all are interactive widgets. I haven't written a single code of text, not code, basically a single line of text. So all of these interactive widgets. So this app is created with Flutter, and I'm using GenUI in this GenUI package. And since I'm not writing anything, the AI is making a judgment on runtime. So whatever you see, these interactive elements, these are all created at runtime. So if you see, first, the AI model gathers all the information that what do you want to cook, okay, in the form of, chips or cards or something like that, any interactive element.
so that the model actually has, a filtration of what the user actually wants, rather than a vague, cook something with paneer or something like that. Then it gives a suggestion, like these are the recipes that you can cook. And then it again asks what recipe, like, do you want to see any recipe or something? So we have a CTA, then we click on this, and then it shows the whole recipe for paneer bhurji. Then we tap the card and we see the full recipe. And then after that, we can adjust based on the chips that the AI model has created for us. So it's adapting as well based on what the user wants at runtime. But it never invented any recipe, okay? This was all in my database. So I have in my code recipe_db.dat, where I have defined what recipes I wanted to, give me when I ask for a recipe. But why do I do that? Like, I have an AI model, Gemini 3.0 Flash Lite, which is running on cloud. Then why do I need to do that? Can anybody answer that? So basically, AI hallucinate कर सकता है, right? We don't want our AI to hallucinate. ये तो रेसिपी है यार, ठीक है, it's fine. अगर वो hallucinate करेगा तो भी चलेगा. But what if हम एक ऐसी ऐप बना रहे हैं जहां पर हेल्थ केयर इन्वॉल्व है, बैंकिंग इन्वॉल्व है? We don't want our model to hallucinate at that time, right? That is why we tell each and everything to our model through database. आपके जो भी like production applications होती हैं, they are all connected to some sort of backend, right? You get APIs, and then you deal the data, like deal with the data there, right? So this is what essentially we are doing with the model as well. So जब मैंने बात करी थी your brand guidelines, your design system, so जितने भी आपने अभी वो देखे थे ना, interactive chips और interactive cards, so GenUI gives you a basic catalog widget जिसके अंदर ये basic widgets तो होंगे. For example, वो जो chips थी, ठीक है, tabs हो गए. But if you want to create a whole recipe card, वो तो customized है ना, that you have to create on your own. That is a customized catalog item. So how it all fits together? There is a conversation, first of all, there is a conversation happening. As a user, I'm giving a prompt to the AI model, and that's the only prompt that I'll give to the AI model. That, hey, can you, I'm craving for, pasta today or burger today. Can you help me create something at home? Then there is a transport layer involved, and there is where we have this A2UI protocol. So A2UI is nothing, just agent to UI protocol. तो जो भी आपको recipe cards दिख रहे थे, they were all built through JSON. They were not classes. And that is what we call as A2UI protocol. So it gives you UI in the form of JSON. जितने भी widgets बनाए थे मैंने, वो सब JSON के like JSON से बनाए थे, ठीक है? And I'll show you how we can create customized widgets. Then we have a catalog, the contract, as I told you. It has catalog items. उसके अंदर आप define करोगे JSON में. And this is where you actually create your own customized, recipe card or something. So I have defined कि there is a name, there is a data schema, and then we have a widget builder. So data schema में I'll define what properties I need. For example, recipe card के लिए I need a string जहाँ पर like मेरी recipe की like bullet points में आएगा कि what recipe I need and something. So I'll either make it required or not required, जो normally हम data हम create करते हैं, right? And then a widget builder, this is nothing, just a function जो कि बताएगा कि करना क्या है. For example, वो जो CTA था, when I click on that view recipes, तो क्या होना चाहिए? It again goes to the data model. So not data model, basically your AI model, and that AI model uses your own data model. So जब मैं वहां पर CTA पे click कर रही थी ना, तो एक local memory में AI की मैं feed कर रही थी कि this is what I need. For example, उसने मेरे से पूछा था what ingredients do you need? So paneer, onion, tomato, these are the ingredients that I need. Then उसने पूछा था कितना time, right? 10 minutes, 20 minutes. So उसकी local memory में it was getting stored. But अभी वो data model वो भेजा नहीं था हमने हमारे उसको AI model को. उसके बाद जब मैंने वो CTA पे क्लिक किया, show me the recipes, तब A2I protocol ने AI को भेजा कि okay, this is what the data we have. This is in the form of JSON, so please create a UI out of it.
Then we have a surface. Surface is nothing, just a class जहाँ पर आपको वो recipe card दिखाना है. But this is a Flutter app, right? So you'll be using classes a lot. So surface is nothing. It's just a widget जहाँ पर आप wrap करोगे कि this is the point where I have to show the model. Sorry, not the model. Basically the whole text or the recipe card, etc. Then again, data model and binding, I already told you. This is a loop, okay? So now, जब उसने मुझे recipes दिखा दी, then I clicked on view recipes. तो ये पूरा का पूरा loop दोबारा चला था. Again, the conversation happened, then A2I, then catalog, surface, data binding. So this is how a model is, allowed to use your own customized catalog item. So if you see, I have this recipe card item, which is a part of like catalog item, and there I'm defining a name, recipe card, then a data schema. These are the properties. I need a recipe ID, I need a reason. Then what I need required is a recipe ID, okay, and then a widget builder that what I want the CTA to do. तो recipe card के click करने पर क्या होगा? That is what I'm going to write in widget builder. So this is how you create your own custom catalog item. So always remember that your app owns the facts because we have the database, right? So everything that we are showing on the UI, that is all, owned by your app only. And the model owns the word. So for example, जो भी लिख के आया था कि hey, this is the recipe that you're looking for and stuff like that. वो सारा जो है वो मॉडल की तरफ से था. Gemini 3.0 flashlight जो मैं यूज कर रही थी. So I have this recipe view. Just I am defining what recipe I need. This is from my database. And then model के steps हैं कि first you have to show this to the user, then you have to show that to the user and stuff like that. For example, मैंने जब वो अपने model को configure किया था तो I told it कि अगर वो user ने बोला है कि create something with paneer, तो you don't have to instantly give recipes. Ask the user more questions about what ingredients do they need, what time do they have, for how many people they are going to cook and stuff like that. And then I told you kids, you can use any model. Currently, I'm using Firebase AI Logic. Do you know about Firebase AI Logic? Okay. Yes. Firebase. Google का है, but what is Firebase AI Logic? Fire like APIs and SMS and we use for that. Yeah, so but we have a product called Firebase AI Logic now. Yeah, Firebase AI Logic. So किसी ने जब integrate किया है कोई भी AI feature, so what you have done? Gemini से API की ली and वो use की होगी, right? Gemini Studio से. कोई और तरीका है? Vertex AI. So that is what, yeah, that is what is Firebase AI Logic. So we have two APIs. One is the Vertex API, which comes in the 𝗏𝗡 plan, which is, no, sorry, the Spark one. 𝗏𝗡 plan is the paid one, right? Spark plan is the free one. Yeah, I got confused. So that comes with the 𝗏𝗡 plan. But since I didn't want to spend my money for the demo, so I use the Gemini Developer API, which comes with Spark plan, which is the free one. जो भी free वाला है यार उसके साथ. अब मैं confuse हो गई हूँ. ठीक है. So I have used, so उसमें क्या होता है, you don't have to take any API key from, Gemini Studio or something like that. Firebase takes care of everything for you. And we have a workshop for Firebase. She's going to talk about Firebase app check and everything. So she'll tell you more about it. उसके लिए like पूरा एक topic चाहिए, what is Firebase AI Logic, that's why. So you don't essentially have to get an API key from somewhere. You just have to initialize your app in Firebase and initialize the AI logic and the developer API that you're looking for, and Firebase will do everything for you. So if you see here, I'm using Firebase AI.Google AI generative model, and the model that I'm using is Gemini 3.1 flashlight. And I have given some system instructions to the model that please don't, initially don't give the user any recipe for paneer or something. Just ask them what they are looking for. And then the model will generate stream of text and whatever you want. And here I'm using add chunk. So if you go to the GenUI docs for Flutter, you'll see that add chunk is basically used for generating all those widgets that you are looking for. But
मैंने जब ऐप दिखाई थी, so that was the happy path. Okay, but problems क्या क्या आती हैं when you are actually building the demo and actually shipping. So model hallucination we talked about, right? Your model can hallucinate. That is why we have our own database. Okay. फॉर एग्जाम्पल मैंने जो भी ऐप बनाई थी उसमें मैंने उसको बर्गर की रेसिपी नहीं दी थी मेरे डेटाबेस में, बट अगर अभी आप जाके मेरे उसको पूछोगे एआई को, जो भी मेरा मॉडल है जेमिनाई को, कि हे कैन यू गिव मी द रेसिपी फॉर बर्गर, तो द एआई विल रिस्पॉन्ड कि आई डोंट हैव दैट रेसिपी. सो आई कॉन्फ़िगर्ड इट. बट जब मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया था ना, कि अगर कोई और रेसिपी मांगता है डेटाबेस के अलावा, तो मुझे फोर्स कर रहा था कि तू बर्गर क्यों खा रही है, तू पनीर खाना भाई, मेरे पास पनीर की रेसिपी है, तू पनीर खा. सो दैट इज वाई मॉडल हेलुसिनेट्स. ओके, then you have to decide that who owns the truth. The model is wonderful with language, but it is careless with facts. We all know that. ठीक है, वो कहीं से भी कोई भी आपको डेटा निकाल के दे देगा और बोलेगा ये सही है, right? So please don't ask your app to remember your prices, your inventory, and stuff like that. Let it own the words, and you own the database. You own the facts in your own app. क्लीनिंग अप द स्क्रीन इज योर जॉब. सो जब मैं आपको अपनी ऐप दिखा रही थी और मैं कोई भी इंटरैक्टिव विजेट पे क्लिक कर रही थी कि यार तू ये एडजस्ट कर दे, लाइक मेक इट मोर स्पाइसी एंड स्टफ लाइक दैट, तो बार बार कार्ड जनरेट कर रहा था ना. अब आप देखो, बार बार कार्ड जनरेट करने की जरूरत नहीं थी. वो उसी सेम कार्ड को अपडेट कर सकता था, उस रेसिपी को ही सेम को अपडेट कर सकता था, उसको बार बार जनरेट करने की जरूरत नहीं थी. सो generative UI keeps adding. Nothing gets tidied unless you tidy it. And the model controls each screen's identity. So जो भी रेसिपी कार्ड, जो भी रेसिपी में क्लिक कर रही थी, उसके पास एक रेसिपी आईडी थी जिससे वो जनरेट कर रहा था वो रेसिपी डेटाबेस में देख के. ओके, so smaller model that reuses an ID will quietly paint over just the last one, as I told you कि वो last one वाली को ही अपडेट कर देगा. So you have to use the correct ID. And it's a chattier loop than a chatbot. तो जब मैं ये डेमो बना रही थी कल, what I have seen is Gemini 3.1 Flash Lite की जगह I was using Gemini 3.1 Flash. And what I have seen is कि 1 मिनट के अंदर जब मैं 20 रिक्वेस्ट भेज रही थी ना, तो वो मेरे को एरर दे रहा था कि you can't make more requests. ठीक है, then I looked up into the model and I saw okay, that is why I can't make it, because this model has this limitation. तभी मैंने Gemini 3.1 Flash Lite यूज किया था. Although उस मॉडल की एक्यूरेसी कम है, but still that did the work for me, right? So you have to be you have to basically pick your model for your own use case. So we have this whole documentation. If you go to Gemini models, I know Gemini, so if you go to the Gemini models, you can see which model is compatible for your, like, which use case. If you are working with healthcare, then which model you can use and stuff like that. Okay, so how is GenUI looking in the production applications? I told you okay, it's very early, but still people are building production applications with it. I wanted to show you this video. Do you know this person? Flutter वाले भी नहीं जानते हो क्या? So this is Craig, who is a developer relations, who is working as a DevRel at in the Flutter team. And I'll just give you a gist of what he created. I know sound पता नहीं आएगा नहीं आएगा, but I'll still want to show you. Let's try कि if sound is coming, okay. Made it to the front of the line. Let's go make a coffee. Typically you start here. Okay, I think sound तो नहीं आ रहा है, but I'll try कि mic से आ जाए. Just let me know. So they built an application, okay, that will, ask the user some questions, and it will, in the end, give you something which is printable on the coffee. And this was shown in Google Cloud Next 2026, and Google I/O 2026 happened this year. So I'll just try to, show you. Actually get to the front of the line, and I'll show you the app. The time has arrived. We've made it to the front of the line. Let's go make a coffee. Typically you start here and you dive in. So my name, of course, is Craig. And I'm a whole milk, no sugar kind of guy. And my happy place is writing Flutter apps.
So now Flutter and Firebase are working together to talk to Gemini and whip up 4 images for me. They're what 𝗏𝗏𝗏𝗏 thinks represent writing Flutter apps. We'll see what it comes up with. All right. So writing Flutter apps. This is kind of a floating city with some birds. That's not bad. There's a bunch of computers. All right, we're going with this one. And now Gemini has also written some questions in advance related to this image. I can dial in and get exactly what I like. So should the digital interface be more or less complex? I already couldn't see most of the details, so I'm going to say less complex. Lighting be dramatic or soft? How about, let's do natural. What species of bird should be present? Obviously, hummingbirds. And how much detail should the island have? Let's save room for the birds. So now we're sending an updated prompt back to Gemini for a follow-up round of dialed in images. Okay, this first one in here, all the computers are mostly gone. It's hummingbirds flying apps around. Here we've got a conveyor belt. I think I'm gonna do this one. I think this is the most visually clear. Okay. So now my order is ready and I'm going to submit it, pass the baton to the aforementioned world-class baristas. So all of this is written with Flutter and Firebase to help users talk to Gemini and get the exact coffee they want. But the app itself uses A2UI or GenUI to allow Gemini to even drive the experience. We saw that with the questions that I answered to dial in my image. And that's a paradigm that we think is really going to help folks in app development. So let us know what you think you are going to be able to use GenUI for in your apps. I've got, I think it was hummingbirds flying around spreadsheets is what it settled on. So maybe not my actual happy place, but this coffee is delicious. So now it's time to put the crown jewel on this operation with a selfie, or in this case. So do you understand what happened? They created this whole application called 𝗏𝗏𝗏𝗏 with A2UI, GenUI, and Firebase. So they used Firebase AI logic the same way I did in my application. And this is what they created. By any chance, are you coming in Google I/O this year in Bangalore? If I may get ticket, so you can go to our. You just need an invite, no? It's a free event, but you have to travel to Bangalore and you have to have an invite with you. I WhatsApp live. Yeah. The Flutter team will be coming there. So probably Craig and Rodi will be there. And if you are there, just hang around with them. They're very nice people. I love talking to them. Very nice guy. And भाई जो लोग Flutter कर रहे हो यार, तुम कैसे नहीं जानते? तुम लोग videos नहीं देखते क्या? Like he is in every video, भाई. And there is this on YouTube we have something called 𝗵𝗃𝗍𝗍 or 𝗵𝗃𝗍𝗍, something like that. So basically whatever I'm talking about today, GenUI or whatever the other people are talking today, on device AI, for example. भाई वो सारी बातें वहां पे होती है YouTube पे. The Flutter team, it's there. We have observable Flutter. He hosts observable Flutter. भाई क्या कर रहे हो भाई? Go to YouTube and वो देखो क्या PUBG की स्ट्रीम में देखते रहते हो. कौन कौन देखता है PUBG भाई? PUBG की स्ट्रीम में कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा. तुम कुछ भी नहीं कर रहे भाई. कुछ तो करो. Cool. Okay, we also have another app called VGP Finances. Do you know about Very Good Ventures? So this is one of the largest Flutter agencies in America, and they have very good engineers. I have worked with some of them, and I'm currently working with some of them. They are very good engineers, and yeah, they created this interface or dashboard, you can say, called VGP Finances, where you can just set your target that, hey, I'm going to retire by 50. So what should I do? Stuff like that. So I'm just giving you a one use case, like they want to retire by 50. So what they should do now. And there are a lot of, investments and banking stuff basically. And this is an app created by a Flutter GDE from Finland called 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏. I hope I pronounced his name correctly.
And he created this a learning language app, a language learning app, basically like Duolingo, but it's not Duolingo. This is created with GenUI, and at the runtime only, the model that you are going to use, it will generate responses based on what you want. I can't read what what it is, but yeah. Okay, so when do you actually want to use GenUI? When it's a great fit and when it's a probably an overkill. For example, you want your screen to change at the runtime for the user. For example, that recipe app that I created, or you want to order something from Amazon or Blinkit or something. So where you are exploring, deciding, narrowing down stuff, you are just taking a photo. In my app, I added an image picker package from which you can actually create a photo. Sorry, click a photo and then give it to the model and say, hey, can you just see, because Gemini 3.1 flashlight is a multi-model, and it can process audio, video, image. So it can analyze the image and it can say, okay, here are the tomatoes or here are the potatoes or stuff like that. So it can analyze the image and it can actually tell you, okay, this is what I see and this is what you can create. And where it's an overkill, for example, there is a static form, a settings page. You don't want to generate something from that page, right? There is a fixed flow that you already know. Okay, ye karna hai, and this is what I want. So you don't need GenUI to be there. So if you want to learn more about GenUI, मैं GitHub नहीं दिखाऊंगी, ठीक है? मैंने बहुत मेहनत करके रात को कोड पुश किया है. आप जाओ मेरे GitHub पे, पूरी रीडमी है and I have written each and every step वहां पर. You can see these are all the resources that you need to learn GenUI. Okay, the first is from the official docs from the Flutter team, the GenUI docs, how you can start. If you want to actually build something with GenUI, then you can follow this code lab. यहाँ पर आपको एक fitness और climbing app करके कुछ है that you will be making with GenUI. Then the third is the YouTube video by Andrew Brogdon. He is a DevRel engineer at Flutter, the Flutter team. So you can see this video. This is a very nice video. And then I was talking about A2 UI protocol, right? So if you want to actually see what A2 UI protocol is, this is made with Google, partnered with Google. So you can actually go through the docs and see what it actually is. And then the Sage demo, the demo that I showed you for my recipe app, you can clone the code from there. It's on my GitHub. And the last is the GenUI package from 𝗵.dev. So you can go see how you can actually use the conversation surface controller, all the engineering terms. So in the end, GenUI turns a model that talks into one that builds. I hope that makes sense. Model who talks and a model who builds. That's the fun part. And the fun part is the rails that you put around it. For example, the constraints, the database that I gave the model to use, the catalog widget, that these are the only widgets that you have to use. Iske bahar kuch nahi use karna, because these are my designs, my brand guidelines. So don't use anything else other than this. And if you want to connect with me, you can scan this QR code. You can connect with me on LinkedIn. I'm always available. I have also written an article about on-device AI, how you can create applications with Flutter using on-device AI. So if you want to learn more about that, so I'm obviously I'm always available to talk about Flutter, GenUI, on-device, anything related to Flutter, and apart from Flutter as well. Okay, and in the starting, I told you that I lead two communities in Delhi. One is the Flutter Delhi and one is the Flutter Flow Developer Groups New Delhi. We are also doing an event on June 20th at Masters Union. So if you want to join that event, you can just join like any of these communities and you'll find the link there. So yeah, looking forward to see you. Probably I'll be speaking there as well. And we'll be talking about like Flutter Flow, Flutter, and we have some lightning talks related to engineering, then AI, what we are talking like here today. And yeah, you can ask any questions if you have. I know GenUI is a very new term, but it's been like there since 2025, so you probably want to check it out. Tell me about myself.
I am Vikas and I am working PW as a staff engineer. So today, I think rather than I am taking the presentation, एक discussion रख लेते हैं, right? So that थोड़ा interactive हो. So I will talk about मतलब कि एजेंट की, जैसे हम एजेंट का अगर 2-3 साल से देखें तो काफी सारी चीजें चेंज हुई हैं. तो डू यू नो कि हाउ इंटरनली इट्स वर्क, मतलब कि कैसे इंटरनली ये काम कर रहा है, राइट? तो कोई भी बताएगा एलएलएम क्या होता है? एनीवन? हाँ, मतलब वो क्या करता है जो हमें कैसे करता है, मतलब कैसे करता है? LLM is a model, right? Large language model. वो मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल ही हुए ना. आप बताओ. राइट. लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेसिकली की बहुत ह्यूज ओवर द इंटरनेट जितना भी क्वालिटी डेटा है, दे हैड ट्रेन्ड देयर मॉडल विद दैट डेटा. तो ही इज एबल टू प्रिडिक्ट द कि व्हाट इज द नेक्स्ट बर्ड, राइट? तो वो काफी प्रिडिक्ट कर सकता है. बट अगर 2023 या 24 में चैट जीपीटी यूज किया हो, राइट, तो इफ यू आस्क हिम एट दैट टाइम कि यार व्हाट इज द करंट प्राइस ऑफ बिटकॉइन, तो वो आंसर नहीं कर पाता, राइट? या ओल्ड इंफॉर्मेशन देता था. बिकॉज कि LLM इज गुड इन मींस अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज और उसका मतलब एंड प्रिडिक्टिंग द न्यू टोकन और न्यू बर्ड्स, राइट? बट वो मतलब जिस डेटा सेट पे ट्रेंड है सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग आंसर कर सकता है, राइट? ही इज नॉट कैपेबल कि वो वेब पे जाके सर्च करके नए डेटा पे कुछ लेके आए, राइट? तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल की ये एक तरह से लिमिटेशन थी कि ही इज नॉट एबल टू मतलब करेंट टाइम से अपडेटेड, कि वो जैसे आप अगर 2023 में चैट जीपीटी से एंड्रॉइड का कोई लेटेस्ट कंपोनेंट पूछोगे तो ही इज नॉट एबल टू आंसर, क्योंकि वो उस पर ट्रेंड नहीं है, राइट? जो लेटेस्ट चीजें आ रही हैं उस पर ट्रेंड नहीं है. तो उसके बाद मतलब दिस इज द मतलब लिमिटेशन की मतलब एक तरह से थी. तो उसको अवॉइड मतलब उसको ओवरकम करने के लिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ. क्या नहीं चल रहा है? हाँ, नेक्स्ट स्लाइड नहीं आ रही है क्या? हाँ, तो उसके लिए जो एआई रिसर्चर है वो रैग लेके आए. रैग क्या है? बेसिकली रिट्रीवल ऑगमेंटेशन जनरेशन. सो व्हाट इज द कंसेप्ट कि जो भी हम चैट करते हैं वो पहले सर्वर पे जाता है, राइट? सर्वर पे दे विल फिगर आउट कि इसमें कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए कि नहीं, राइट? सपोज आपने पीडीएफ अपलोड किया, राइट? तो पीडीएफ भेजा कि मुझे पीडीएफ वाले डेटा में देखना है, राइट? तो वो पीडीएफ किया है या फिर आपने सपोज बिटकॉइन की लेटेस्ट प्राइस पूछा है, राइट? तो इट विल डिटेक्ट कि यार बिटकॉइन की लेटेस्ट प्राइस चाहिए, राइट? तो सर्वर विल वर्क एज ए इंटेलिजेंस कि वो एपीआई हिट करेगा और वो डेटा लेके आएगा, राइट? देन इट विल गोज टू द LLM. वो फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल को देगा कि भाई ये बिटकॉइन की प्राइस है और ये क्वेश्चन पूछा है. तो LLM इज गुड इन अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज और मतलब कि क्या पूछा गया है और फॉर्मेटिंग एंड समराइजिंग द आंसर कि किस फॉर्मेट में करना है, क्या है, क्या क्राइटेरिया, राइट? तो लैंग्वेज में ही इज वेरी गुड, बट उसके पास रियल डेटा नहीं है, राइट? वो इज दैट इज प्रोवाइडेड बाय द बैकएंड, राइट? जैसे हम चैट करते हैं तो वो सर्वर पे जाएगा, सर्वर विल फिगर आउट कि इसमें कुछ क्या क्या एलिमेंट मिसिंग है जो रियल टाइम वाले चाहिए, राइट? वो इट विल फैच फ्रॉम द अनदर सर्वर, राइट? देन गिव टू द LLM और LLM फिर कॉम्प्रेंस करके आपको आंसर देगा. जो चैट में आप देखते हो कि एक अच्छा सा बिल्कुल फॉर्मेट में आंसर मिल रहा है, राइट? तो दैट इज रैग, राइट? बट रैग की लिमिटेशन क्या है कि देयर इज एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन. जैसे बिटकॉइन एक प्राइस हो गई, सपोज कल को आपने बोला कि यूट्यूब से मुझे कुछ चाहिए, राइट? तो देयर लॉट ऑफ चेक्स विल बी इन प्लेस अगर आप रैग के थ्रू करोगे, राइट? तो रैग में ये लिमिटेशन आ रही थी कि बैकएंड विल बी अ सुपर ब्रेन हो गया LLM के ऊपर, राइट? कि उसे बहुत सारे डिसीजन लेने हैं उसके ऊपर सो दैट कि LLM करेक्ट आंसर दे पाए, राइट? तो आफ्टर दैट मतलब MCP आए, राइट? MCP क्या है कि मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल. बेसिकली इसमें क्या है कि हम बता रहे हैं कि किस एपीआई को कॉल करना है, राइट? रादर देन बैकएंड डिसीजन ले रहा है, LLM डिसीजन ले रहा है इसमें कि मुझे किसको कॉल करना है. जैसे बिटकॉइन की प्राइस है तो हमने उसका MCP दे दिया, राइट? कि इस एपीआई को हिट करके आप ला सकते हो. और उस एपीआई की हिट करने के लिए क्या क्या पैरामीटर चाहिए,
दैट वी और ऑल्सो पासिंग इट, राइट, कि ये पैरामीटर चाहिए कि भाई तुम्हें डॉलर में उसका प्राइस चाहिए या रुपए में चाहिए प्राइस, राइट। तो दैट पैरामीटर वी आर मतलब आस्के कि ये वाले पैरामीटर एलएलएम को देना है, राइट। तो दैट इज हाउ दे आर सॉल्विंग। तो अब ये क्या है, स्केलेबल मॉडल हो गया कि अब तो अभी क्या है, अब जैसे आप बिटकॉइन की क्वेरी पूछते हो कि बिटकॉइन की करंट प्राइस क्या है, तो व्हाट विल डू कि हमने एक एमसीपी बना रखा है जो एपीआई है, सपोज करो उसमें एक पैरामीटर है कि भाई इसकी मतलब इसकी प्राइस क्या है, वो रिटर्न में एक स्ट्रिंग दे देगा, राइट। तो हमने एक एमसीपी बना के दे दिया, और एमसीपी का नेम एंड डिस्क्रिप्शन कि ये बिटकॉइन फिगर आउट करने के लिए है, और इसका डिस्क्रिप्शन है कि इसमें ये पैरामीटर पास करने होते हैं। हमने सिर्फ ये इंफॉर्मेशन एलएलएम को दे दी, राइट। नाउ ही इज अप्लाइंग द लॉजिक कि भाई मुझे टूल्स की जरूरत है, एमसीपी की जरूरत है, इसको कॉल करना है, तो ही विल रिटर्न की मुझे एमसीपी कॉल करना है, राइट। उसके बाद वो एमसीपी का जो रिजल्ट आएगा फिर से हम एलएलएम को देंगे, राइट। तो यू कैन सी मतलब इसमें क्या हो गया, एलएलएम ही डिसीजन ले रहा है, डिसीजन मेकर है। तो नाउ इज द एलएलएम इज अ सुपर ब्रेन। तो इसमें हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टूल दे सकते हैं, और वी आर नॉट मतलब कि हम अपने एंड पे कोई लॉजिक नहीं लिख रहे हैं बैक एंड में, राइट। वी आर गिविंग की सारे ये एमसीपी अवेलेबल है, यू कैन कॉल देम, और यू कैन गिव मी द रिस्पॉन्स कि कौन सा कॉल करना है विद व्हाट पैरामीटर, राइट। तो इस बेस पे वी आर मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि मतलब नाउ देयर आर नॉट कि हम स्केल नहीं कर सकते, तो देयर आर मल्टीपल मतलब एमसीपी वी कैन इंटीग्रेट, और दैट्स इज हाउ इट्स वर्किंग। तो बेसिकली एलएलएम मतलब एआई एजेंट एक तरह से सिस्टम हो गया विच इज हैविंग एलएलएम इन अ लूप, राइट। कि बार बार वो क्वेरी कर रहा है कि हमारे पास एन नंबर ऑफ एजेंट है, सही, एन नंबर ऑफ एमसीपी है, समटाइम इट्स कॉलिंग बिटकॉइन वाला, समटाइम इट्स कॉलिंग वेब स्क्रॉलिंग करनी है, या समटाइम मुझे कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट। या मुझे इंटरनल अपना सिस्टम है जो कि मुझे एक्सपोज नहीं करना है बाहर वालों के लिए, राइट। तो वी कैन डू दैट एज वेल। तो एनीथिंग, मतलब मैं ही बोल रहा हूँ कुछ डाउट हो तो बीच बीच में हाँ, माइट में मैं ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ तो शॉर्ट में रखते हैं, फिर मैं आगे बढ़ के एक एलएलएम में मतलब भी आई डू लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट कि मतलब एलएलएम कैसे काम कर रहा है, राइट। तो जैसे ओपन सोर्स भी काफी एलएलएम है, राइट, दैट वी कैन डाउनलोड इन अवर मशीन, और उसके ऊपर वी कैन राइट द कोड। तो मैंने क्या किया है कि एलएलएम एक डाउनलोड किया, फिर एआई एक क्लाउड को दिया कि भाई मुझे एक एआई एजेंट बनाना है जो कि तुम्हारी तरह है, राइट। ऑल द थिंग्स, मुझे एक इंटरफेस चाहिए सीएलआई में, हु टेक द इनपुट्स और आउटपुट दे आपकी तरह, राइट। तो पाइथन में काफी सारी लाइब्रेरी हैं जो कि वर्क करती हैं। तो जैसे आरईपीएल एक तरह से पैटर्न है कि पहले वो रीड करेगा, राइट, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर प्रिंट करेगा, वो भी लूप में। जैसे सीएलआई में आपने क्लाउडी यूज किया हो कर्सर, तो वो यही करते हैं, आरईपीएल करते हैं। आप भेजते हो, वो लूप में चलता है, एग्जीक्यूट करता है, फिर प्रिंट भी करता है, साथ ही साथ प्रिंट करता चलता है, और फिर रिपीट करता है उस चीज को, राइट। तो लेट मी शो द, तो इसमें मैंने थोड़ा एमसीपी भी बनाए हैं लोकल, राइट, कि फाइल को रीड करना है, राइट करना है। तो हाउ वी कैन मतलब मैंने एमसीपी बना के दे दिया, अगर आपको मेरे मतलब मेरे सिस्टम में फाइल को राइट करना है, राइट, तो हाउ की यू कैन डू दैट, राइट। कि पाइथन में सीएलआई की लाइब्रेरी है, आई हैव इनहेरिट दैट, तो मैंने उसे बता दिए पैरामीटर, लेट मी शो यू। जैसे ये फाइल वाला एमसीपी है, राइट, तो ये रीड फाइल स्कीमा हो गया, इसमें मैंने रीड फाइल का नेम दे दिया, डिस्क्रिप्शन ये क्या करता है, राइट। तो जब भी मैं कॉल करूंगा एलएलएम को, राइट, तो आई विल सेंड कि यार ये एमसीपी तुम्हारे पास अवेलेबल है, राइट, आपको पाथ देना है, ऑफ सेट और लिमिट भी सेट कर सकते हो, बट रिक्वायर्ड पैरामीटर सिर्फ पाथ है रीड करने के लिए, राइट। तो इस टाइप से आप टूल बना सकते हो, राइट। लेट मी शो द डेमो, राइट। तो इसमें जैसे मैं पूछूंगा इससे कि अब सपोज कैन एनीवन टेल कि जो एलएलएम होते हैं वो स्टेटफुल रहते हैं, स्टेटलेस रहते हैं, मतलब वो रिमेम्बर कर सकते हैं चीजें या नहीं। जैसे हम बहुत सारी कन्वर्सेशन करते हैं, राइट, तो ही विल गिव आउटपुट अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, राइट। एक लिमिट कर सकते तो वो कैसे होता है, वो एलएलएम रिमेम्बर करता है या फिर डेटाबेस में हाँ, मतलब बेसिकली एलएलएम इज अ स्टेटलेस, वो तो एक डेटा पे ट्रेंड है, वो उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देगा।
बट जब हम वो प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट बहुत सारी चैट करते रहते हैं तो वो इट्स अ टॉप लेयर, मतलब जो एजेंट हम बोल रहे हैं, राइट, तो वो एक सिस्टम है, राइट, तो वो कैसे करके रखता है सारा कुछ। लेट मी शो यू। जैसे मैं इससे पूछूंगा अगर मैं इसको बोलता हूँ रिमेम्बर नंबर 42, राइट। अभी ये मतलब स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है तो काफी स्लो है, राइट, और इसकी मेमोरी भी कम है। इसने रिमेम्बर कर लिया। अब अगर सपोज मैं इससे पूछूं कि टेल मी द नंबर, रिमेम्बर नंबर, राइट, तो क्या आंसर आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? कैन एनीवन टेल? लिख ही दिया इसने, 42 बता दिया, राइट। कोई इंटरेस्टेड लग नहीं रहा है अपना, सब वो फील कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, बड़ा बड़ा नहीं हो पाएगा क्या इसमें? स्क्रीन तो बड़ी हो जाती है, प्लस से नहीं हो रहा है। स्क्रीन बड़ी उसके नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी। कोई नहीं, कोई नहीं। अभी तो दिख रहा होगा, क्लियर कर लूं? कंट्रोल प्लस से ही होता है, ठीक हो रहा है। कमांड प्लस होगा ना। अच्छा, ये कमांड प्लस होगा। ओके, कमांड नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, वर्क नहीं कर रहा। अच्छा, वो उसके अंदर कोई नहीं। कोई नहीं। मैं जूम पे देख लेता हूँ। हाँ, जूम पे देख। हाँ हाँ, बेसिकली सपोज अगर मैं अपनी कन्वर्सेशन क्लियर कर देता हूँ इसको, राइट, मैंने अपनी कन्वर्सेशन अभी क्लियर कर दिया। अगर मैं सेम क्वेश्चन पूछूंगा, मतलब मैंने तारीख कैसे क्लियर कर दिया, राइट। अगर अब मैं सेम क्वेश्चन पूछूंगा तो इट इज एबल टू आंसर द क्वेश्चन और नॉट, मतलब कि रिमेम्बर नंबर बताएगा या नहीं? नहीं बता पाएगा, राइट। दैट इज, मतलब इस टाइप से एक्सपेरिमेंट करोगे तो यू विल गेट टू नो कि एजेंट इंटरनली कैसे काम कर रहा है, राइट। इसमें मैंने एक इंस्पेक्ट करके भी इससे बनवाया था कि जब मैं चैट कर रहा हूं तो व्हाट आर द थिंग्स यू आर पासिंग, राइट। तो अगर आप इसमें अब देखोगे, राइट, कि जैसे ही आपने वो चैट भेजा, चैट के साथ ये बहुत सारी चीजें भेजता है। यूजर इनपुट, टेल मी द रिमेम्बर, राइट। तो जो भी टूल्स हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि यार अभी टूल्स हैं तो अभी सारा डिसीजन एलएलएम ले रहा है, राइट। तो हाउ इट इज टेकिंग डिसीजन कि एलएलएम, जो हम कन्वर्सेशन भेजते हैं उसके साथ हम सारे टूल्स भेज रहे हैं उसको कि यार व्हाट आर द टूल्स यू कैन कॉल, यू कैन यूज टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। तो मैंने इसमें नेम भेज दिया। बेस्ट कमांड अगर आपको चलाना है तो ये वाला टूल यूज कर सकते हो, राइट। डिस्क्रिप्शन इसका ये है, जब भी आपको लगे कि कमांड कोई रन करनी है, राइट, यू कैन यूज दिस टूल, राइट। और इसमें क्या क्या पैरामीटर भेजने हैं, टाइप स्ट्रिंग भेज सकते हो, राइट, और रिक्वायर्ड कमांड रिक्वायर्ड है। तो एलएलएम क्या है कि बहुत लार्ज डेटा सेट पे ट्रेंड है, तो मतलब बेस कमांड की भी रिपो ही होगी, राइट, सारी कमांड उसे पता है। तो गुड ही इज बेटर इन दैट कि वो उसे पता है कि किस चीज के लिए कौन सी कमांड रन करनी है, राइट। तो उसने इंटरनेट पे सब कुछ सीख रखा है कि भाई कैसे करना है, एंड्रॉइड की एपीके कैसे इंस्टॉल करनी है, उसको अनइंस्टॉल कैसे करना है, या फिर लॉग्स कैसे कैप्चर करने हैं, उसे सबकी कमांड पता है, राइट। अब उसे क्या चाहिए, हमारे सिस्टम का एक्सेस चाहिए। आफ्टर दैट इट विल डू ऑल द थिंग्स ऑटोमेटिकली, राइट। तो वो टूल्स हमने इसमें भेज दिया, राइट, देन मतलब वो कर सकता है, राइट। अब सपोज मुझे कोई फाइल रीड राइट का मैंने इसमें टूल्स बना रखा है, राइट। मैं बोल रहा हूँ क्रिएट फाइल abc.x.txt, राइट। तो अभी इसने रीड नहीं किया, रिटर्न 0 बाइट, क्योंकि मैंने कुछ डेटा नहीं दिया था, राइट। अगर मैं देखूंगा अब इंस्पेक्ट करके कि क्या क्या हुआ है, राइट, तो यू विल गेट टू नो कि उसने टूल यूज किया है जो मैंने दिया था अपने सिस्टम का, कि मेरे सिस्टम पे ये वाला टूल यूज कर सकते हो फॉर द राइटिंग द फाइल, राइट। तो ये उसके पास टूल अवेलेबल थे, राइट।
ये मैंने प्रॉम्प्ट दे रखा था कि हाउ यू सपोज टू वर्क, राइट। ये पुराना वाला, ये वाला मैंने सेकेंड बार में पूछा था, राइट। तो यू कैन सी, देखो उसने ही हैज यूज द टूल राइट फाइल, राइट। तो राइट फाइल का टूल का यूज करके ही हैज क्रिएटेड द फाइल। उसने कंटेंट में ये वाला मतलब कमांड दिया और ही कैन राइट द फाइल। एनी डाउट, मतलब कुछ? हाँ वो जो बेसिकली जो टूल्स होते हैं, हाँ तो हमें सारे टूल्स A to Z राइट करने होंगे अलग फाइल्स। हाँ, मतलब वो एआई एजेंट ऑलरेडी कर ही रहे हैं ये चीज, राइट। वी कैन क्रिएट और एज वेल, मतलब सारी कंपनी अपने अपने देती हैं, राइट। स्लैब से कनेक्ट करना है, किसी से भी कनेक्ट करना है। क्लाउड बेस में भी ऐसे ही काम। हाँ देखो, बेसिक टूल वो सारे दे देते हैं, रीड राइट जो भी करना है उन्हें, पैटर्न मैचिंग वगैरह, राइट। उसके अलावा दे गिव द प्लगइन की यार आप अपना ऐड कर सकते हो, राइट। कि जैसे आपको स्लैक से इंटीग्रेशन करना है या जीरा से इंटीग्रेशन करना है या गिटहब। So today we'll learn how to secure the edge and preventing AI token theft. Okay, so I'm Srishti. I'm a Google Developer expert in Firebase. With that, I'm also a software engineer to 𝗕𝗵𝗇. Along with tech, I love to read books and travel. And yeah. So today's requirement, we basically need Node because we play around. I already have a code built for X1 and I'll be playing. So you can easily clone it and play around. So we need Node for that. 𝗕𝗃 obviously to clone the code and work around it. And 𝗥𝗆 if you want to actually play the app in your phones, if you can do it through 𝗥𝗆. But considering the time limit and also a lot of time, 𝗥𝗆 does not work on everyone's phone. There are some or the other version issues and all. You need to sort that out. It takes a lot of time. So we'll use the web version of React Native and then Google account, basic Google account to run Firebase. Okay. So what is edge? Anyone? What does edge mean? I said secure the edge. So what is edge? No one? Okay. So edge is basically your application. Anything that runs on your end. Maybe it can be on a tablet, on a mobile phone, on a system, on a laptop, your websites, etc. Anything that is there on your client side is called as edge. So risk of tokens. I'll show you something. Let's see. That works. So I have a basic application built in Firebase, and this is my database. So some just random form I filled and added users. So technically only logged in users who are logged into my application, who are stored in the application should log into this and have access to the database. Only those should read write. But yeah. So this I have built a demo backend, and so I have somehow got the URL and all the data. So basically, curl of an application that is running, I got the curl from somewhere. I reverse engineer went to the network stack. I got the curl of one of the applications, and I'm trying to run it on my local system just from a normal terminal without any tokens, without anything. Okay. Successfully added to data. Now this is just a small application, which is very dummy application. Imagine if this was hosted on production. Imagine if some hacker had this data, had some API calls, made some API calls, and imagine if this was running on AI. Tokens would just go in a flash of a second. All the data would get corrupted. This happens a lot. You see some banks' data is corrupted, some of the systems are down. So this is one of the reasons. And okay. So I just ran this on one simple call on a terminal. If I run this in a loop, so I say for 5 minutes and every second I call this API call. Imagine the data that is getting added to my system. Okay. So that's where Firebase comes in. What is Firebase? Akanksha earlier spoke about AI logic. So what is Firebase? Anyone? How many of you use Firebase?
How many of you use Firebase here? So all of you use that? Yeah, so I have used Firebase, but I don't know Firebase होता क्या है? मैं web application तो बना लेती हूँ, मुझे पता नहीं किस पे बनता है, React कैसा होगा शायद. So Firebase, like you said, is backend as a service. So it gives you different services like database हो सकता है, या authentication हो गया, या for example hosting हो गया. Even now it's added features to secure application, and not just mobile application. You can also host your web application, community application, iOS, Android, all applications. And one project can be used for multiple applications. So among all these features, there is an app check feature which is recently launched. So what does app check do? It is not authenticating who you are. It is not saying that, okay, she is logged in, so she is 𝗔𝗫 and this is a password. It's not authenticating. So authentication and app check is different. Authentication is telling you who you are. So who the user is. If you're logging using your Gmail and password, so if you see, if I put my Gmail ID and password, it will easily show that my name is this. So that is authentication. But app check will tell you from where the user is coming. So it will say, okay, for example, I'm just using the Android app. So it will authenticate if the user is actually coming from the Android app that you have registered. So it's not a bot user, or it's not some script or not some terminal. So like I said, app check is just an attestation and not authorization. So I'll show you the steps of how to do that. So it is a 4-way handshake. And what are the exact steps? This is the step. So your device, for example, let's take an Android device. It will connect. You have to register your apps on the App Store, right? So it will connect to the Android and it will get. So it will get a valid token for that particular device, that particular application. And this token will be attached to your API calls or any backend calls that you make to Firebase. And then Firebase will check, okay, the token that is coming is correct from the application that is registered on Firebase. So that is how this handshake works. And if it is a valid application from a valid registered app, then only it will allow to make database calls or read the data, write the data, etc. So if I don't have a Firebase, I can use it for custom as well. So in that case, it just gets a token, and that token is passed to a backend, and then backend verifies it using the Firebase SDKs. Okay, let's play around. So we'll actually work on the application and see. We'll try to also see our applications working with Firebase SDKs and Firebase App Check. Okay, so this is the QR to the presentation I'm shared. You can just scan this. The presentation later on has videos, so a lot of time Firebase might lag depending upon the network or the that your laptops are connected into. So if you lag behind or if you find any difficulties, you can refer the slides, refer the videos for steps. Also, if you want to refer the slides later, you can refer it through here. Now, I just want everyone to open the browser and type Firebase console, log into Firebase console. So this is what your Firebase homepage should look like. If you have already projects, then you will find your projects over here. Create a new project. You can have any project name and continue. Now there's an option to enable Gemini. Keep it on because it helps you
If you get stuck anywhere, if you don't know how to get in service enable, you can ask Gemini, which gets the project context. Disable the analytics project feature, because we don't need that right now, since this is a very small scale, a simple demo app. And then a simple create project. So it will take like a couple of minutes, your project being created. Once a project is created, this is the home page that will look. Since I already have an app that is hosted or registered, this particular shows the reads and writes for the data that I have used Firebase for. Okay, so now we'll actually link our application with Firebase. We'll set up database and authentication features. So along with app check, we'll also learn few of the Firebase features. If you go into authentication, you have to enable it. So my slides have the videos later on as well. So if you are lagging behind or if something is going wrong, you can refer the slides. Yeah. So to add an application, you had an option to add app. Or like I said, mentioned earlier, you can add an iOS app, an Android app, a web application, etc. And one simple project will be accessed by these different applications. So for today, the project is in React Native, but like I said, we'll be using React Native web. So we'll register a web application. Write any nickname for your app. So let's see. If you want to host your application later, you can enable this, but right now we'll keep it disabled, and we can later on do it through the other services as well. So not required to enable this at this moment. And register your app. So it will show you some keys that we'll later on use when we have the repo clone. So you can simply close this. Now we'll enable the authentication service. Yeah. So under security, go into authentication. So this is basically telling Firebase, okay, now my application get started. My application will basically allow users to register through these particular services only. For example, email ID and password. So I'll enable email ID and password as well. And also we can add a new provider. So let's add Google. Email with the link is also. Yeah, but they have deprecated it, so it's better not to use it. And you can add a support email, keep the same email, that's up to you. So whitelisting, if you want to whitelist any of the external projects, you can do that, but right now we don't need that. So I'm saying that you can add more provider if you want, like you can add your Microsoft account, you can add your GitHub account, etc. Even you can add phone number anonymous as well. But right now we just explore these two. We'll also enable database for that. Yeah. So Firebase gives you multiple options for database, but we'll use the Firestore because we have. Yeah. So I'll show the data structure, how it is, to give a better understanding. Yeah, so I've added the details, and then each details for each. So this is the user's login. So that is a UUID. Whenever I log in, if you see, authentication will assign a unique ID to each login session. And that login session I'm using to add database as well. And then under each user, I have added timestamp and the data that is getting added. So every timestamp, every time a user submits the data, the timestamp will get added and all the data will be added accordingly. So to enable that, okay, so you need to create database.
Since this is not yet on production, we create on a standard edition. And I don't need a lot of querying so as well. Also, keep the location default, keep the database ID default. Lot of times if you're changing the location, make sure that your other services are also in the same location, because cross location services are not allowed. You will get an error. So let's keep the default location and start in test mode. If you see, there are Firebase rules. Now, one way of protecting a database is having Firebase rule. That is the first way. So whenever, if you see this, there is the first rule is read and write is allowed only until a specific time. After this, the read and I'll get an email, okay, your read and write database access is going, and this I cannot read and write data to this particular database or this particular project. In production mode, you can add other read and write rules as well. If you see for default, it is always false, but you can add another rules. For example, only the logged in user IDs will be able to access the rules. So that is the first way of protecting your database. Okay. I hope everyone has a project set up till here. So let's also set up app check. If you go to app check, now this comes along with a Spark plan, so you don't need to upgrade to a Blaze plan. You don't need to pay anything, but there are certain amount of limits that you can get through their documentation. You click get started. Okay. See, my default app is already registered. Now I'm using this in a normal dev mode or local mode. So I'm not going to register any Android app over here, but to register an Android app, you have to add the Android app to your PlayStation and to your Play Store, and you get a 𝗓𝗃 key, and then you can register it using reCAPTCHA. You can find the documentations in the Firebase documentation for app check. If you see right now, there are no APIs enabled. Yeah. So you see, it's unforced. So I have these two services enabled, but yeah, the app check is not forced here. Okay. But the app that is already using will show the logs. So this is the app that I'm already using. You can see the logs. So I had tried running a query, and it shows that there were 100% unverified users. But for login, I found like 10% were verified and 90% of the users were verified and 10% were unverified. So the monitoring also happens that you don't need to add any separate code or any separate logic to do that. Yeah. To get reCAPTCHA, you can just go to I'll show you the steps for how you can add a reCAPTCHA. Right now, we don't need it because we are doing it on local, and you'll get the token ID in the local as well. And then we can directly copy it for a demo app. But I'll show you how we can register an app. So in a Google Cloud, yeah. So you can search reCAPTCHA admin dashboard, and you will be added over here. I'll show you the dashboard. Yeah. So you'll be navigated over here, and then you can add over here. So what label you want, what is the reCAPTCHA type that you want, what is the domain. For example, if you have an app domain or web domain, you can add your domains over here and which project you are using, which Google project you're using or which Firebase project you're using. Accordingly, you can select that and you can submit. Then you'll get a reCAPTCHA key. Okay, for this project, we don't need it, so we'll skip that. And we'll so this is the repository QR. Just scan this. We'll fork the repository. I have already written the code. I'll explain the code step by step. So just a minute. I think it points to the wrong repository. Let me just delete it.
use the updated repository. I've updated few of the code in the new one. So once you have the link, just fork the repository. And then you can add the repository name, whatever you want. You can also clone it. I have no issues over cloning it. You can fork it to keep a copy in your repository, because later on I'll make this as a private repository. So it's better to have a copy in your own GitHub accounts. Okay, so there are two different codes. There is a backend server and a front-end server. So in your terminal, I hope everyone has the link to the repository and is able to fork it, right? So you need to run the front-end and backend simultaneously, obviously, because we are going to make some API calls as well. But we can start with just the front-end as well right now. And go inside each folder. In the backend folder and front-end folder, there is one more folder called mobile. So go inside mobile folder as well and just run npm install. So this is basically to get all the packages that I've mentioned in package.json so that your application runs. The basic packages are nothing but simple React Native packages, some of the Expo packages, then Firebase packages. So very basic package. So you don't need to. It will take hardly a minute or so to do the npm install. So, yeah. Now, if you open your Firebase files, you will have this as empty, and there will be mentioned that Firebase keys have to be updated over here. To do that, go back to your Firebase project. Am I going fast? Should I wait until everyone has a repository clone? Okay, fine. So in settings in general, if you scroll down, you have your keys here. Just copy the Firebase keys from here. You don't need to copy the entire config, only the keys, and add it to your front-end repository in the Firebase.js file. In project in general, if you scroll, you have your keys. Now we need to do one more thing. So in backend folder, create a service account key.json. And in that, what we need to do is come back to your Firebase account under service accounts. In settings under service accounts, scroll down and you need to generate new private keys. So once you click generate and generate key, a JSON file is downloaded to your system. So that JSON file contains similar keys, but some few extra key value pairs for your backend system. So copy that JSON file into your service account.json. Now I'll run the same curl, but I'll use the protected. So yeah, what my backend, I had added two routes. First I showed you was an unprotected route, which did not check. It basically just added the data directly. It did not verify if the user was correct or not, anything. It directly added the data. But I have a new route which verifies. So this verify function over here, verify app check. What it does is, it will verify if my user is coming from the register app itself or not. And then it will, if it is coming from the register, then only it will proceed with If it is coming from a verified app, a registered app, then only it will proceed with the function, else it will throw an error. I'll show you an example. If you see, if I use the same verified route, you see, it's, okay, I've not started the server.
To run the server, you just need to type npm start. If you see, you can get that authentication is successful and Firebase SDK is initialized. Now, if I try to run the script, it will throw unauthorized error, app check token failed. So even if I get this API caller from network, even if I get who the user is, even if I use the user's credential, app check is going to say, sorry, this is not coming from a registered application. This might be a bot. This might be someone running it from the terminal. This is not a registered application, right? But same. Okay, let's run it from the front end. Like I said, I'm using Expo and I'm using the web. Yeah. Okay. If I add some. If you see the network call, my APIs will automatically add a Firebase app check token. And this token is then verified by my backend. And then backend will say, okay, successfully added data for this particular entry. But earlier it threw an error saying app check failed because I had done it through the terminal. But from front end, it was successful. Now, how does front end add the token? Yeah. If you see in your console log, you have a token over here. You need to copy this token. This is the token that front end has generated temporarily because I'm running it on local. I've not registered any local application over there. So you need to copy this token. And in Firebase, you need to add this token. So you have managed debug tokens, right? So this is used for debugging and running your application on local. If you don't have to run it on Android or iOS, and you can add this token over here. I've already added 2 tokens. And hence my application is working correctly because this token is verifying if my network call was from the application that is actually running. So if you see the local host, this is getting registered over there. Anyone was successfully able to run the entire project? Not yet. Any errors so far? If you're facing any errors, do let me know. I can come and help you out. To register your mobile applications like your Android or iOS, you first need to register your mobile application. For projects, you can do that. So add app, you can register your Android app. If you have worked on Android Studio, you get the package name, right? So you need to register your package name over here. And similarly, the app check, you need to register your app as well. And then if you can vary the, I'll show the documentation. Yeah. Yeah. So in yeah. So once you have your app also registered on Google Play Console, so for that also you need a package name from Android Studio can get a package name, and then you can, once it is registered there, you can use the app integrity, and then it checks with the app check, and the tokens are then passed on to your backend services as well. Anyone was able to complete the application now? Facing any issues so far? Server.js? No, it's in the backend folder. Are you on the right repo? I had updated the repository link. Can you scan it again? There should be 2 folders, a backend, a front-end folder.
use Cloudflare as a like for server application Cloudflare workers. We use Firebase authentication. Or do I have to only use Fire? No. So you can do that. So when you're in the backend, you can get the token. So I can show you. Because Cloudflare has a generously free tier for a lot of applications. Yeah. So does Firebase. And Firebase don't have generous. It has certain additions. Yeah. So but authentication is best for Firebase. Yeah. Right. So can we use mix of? Yeah, you can use. So this will you can use the Firebase SDKs and you can have the APIs. There is a verified token, get token API calls, and then you can use that directly. So in this also at the backend, I'm using the get verified API calls. Because I use a lot of Cloudflare applications and it has a lot of great ecosystem creating applications, serverless and 𝗔𝗫. And I've heard that even Cloudflare 𝗔𝗫 has a lot of less training for capture authentication than Google Capture. Google Capture takes a lot of memory and data, but 𝗔𝗫 has. It depends upon what front, like how many users you have on application. If you want to go on like if you don't want to use a Firebase Blaze plan, then you can go. For Generative. Yeah. Yeah. You can use both. So anyways, you have the UI, so you can from Firebase for authentication, which is as secure as this. Somewhat in that. Build your own the 𝗔𝗶 tokens as well. You can. I have so far. Do they provide OTPs also in the free or do they have to authenticate the rest? For phone verification, I have not tried out phone verification yet. Only email and password. Yeah. Earlier they had this email where you can directly anonymous emails where you can verify your emails as well, but they are deprecated. I think some years back they used to put free OTPs, but some government regulation they stopped it. I think it is a very easy way to like for a web application want to authenticate the emails because in iPhone people are not logged with the Google accounts. That's the major challenge. In iPhone, if you are using Chrome a lot, then usually people are logged in Google accounts. Yeah, even I have logged into Google accounts. But iPhone Safari is a pretty good for default if you're using Safari, but then you have this option as well, right? Let me just. You said that email, there's one thing I log into Perplexity. When log in, I don't see that. which is the option email guide. Email options like login with email. Just a minute. This one? Yes, passwordless. Yes. So it's getting deprecated. That's what I said. Most companies like and you need put my email ID. Authentication or it sends so Firebase will send you a link to verify your email first. Yes. If you're like you get this email, right? You click and then it verifies. They use OTPs, but this will send you an email like a proper verification link. And then if you automatically similar way they log in with password because you have used secure. Because only I who have email access can actually log in. So email ID password also secure, right? I didn't understand what is different. If you, it depends on you, right? If you're giving it, if it is getting hacked, your email ID is also going to get hacked. In that case, anyways, if I use this method, I can use an email directly and log in over here. Yeah. So AppCheck is not going to do authentication. It is basically a layer. So whatever requests are coming from your application, if AppCheck is verifying if that application or the request that is coming is correct. It is not checking if the user is correct or not. That is the difference that I mentioned earlier. So if I, for example, I have logged in from your account, I took your credentials, I logged in from your account, but I'm using correct application. Then AppCheck will say, okay, she's an authenticating user coming from a correct application. But if I'm using a bot, running it through some scripts, then I'm not user, the application is not tested. That's the difference. Any questions? I have a question. Like, PTR is working not how is actually much different from generic bot protection or DDoS?
Okay, so this is like I have not used what application you have said. This I'm giving an example because it's already connected with Firebase. So if you have a user, the application hosted and linked with Firebase, so this is pretty easier because all the logging, monitoring is there itself over here itself. I'll have to work on the other application that you said, then I can compare and tell you about it. Or maybe you can try out. You can compare which one is faster and which one is more secure. Yeah, so basically, I'm working at 𝗏𝗏. So we are handling the custom SDK that is actually for advanced AI. So I was just being very curious, how is it actually? I've never tried AppCheck, but I've used Firebase a lot of my applications. But every time I used to think the AppCheck might just for capture it. No, it's not just capture verification. So it's not just capture verification. It will basically whatever package or whatever application is there. So what it does is, for example, if I have an Android app, it will connect with my Android provider. So the native providers that will check. Okay, all the DBs, it will get a token, and that token is then passed to the backend. And the backend will verify, okay, if this token is actually coming from the actual Firebase account that I've used or whatever app is registered, and then the communication will happen. So it is the handshake that comes. Any questions you can ask? No questions. So I'll just answering your one more thing. It's not like secure. It's providing an attestation. It's just saying that okay, this app, this API call is correct. Whenever you submit a document, we sign this, saying okay, this is for me, so I'm signing it. So similarly, AppCheck is also doing that. And then at the back end, it is verifying if the signed document is actually signed from whatever is registered on Firebase. So that actually arises a question. So I might be using virtual devices, right? There might be a virtual mobile application, and I may be using Firebase in that particular project, and maybe some work. So how will you have package names and there is a registration names, right? You need to register over here. Okay, I'll show you again. So you can register your application here. I can actually run single application, even files, and virtual devices. So the package name of the application will be same, right? So, for example, in Android, you have this package.com, something.com. So that will remain same for both the devices. That name is registered. But how will actually Firebase define that this particular request is a very good question? And like from your .package.com application, right? So, for example, I have an app, the same app. There's like, for example, it's here also. I have a React Native app, which is also, if I clone it and run it on my Android, it is going to run on the Android on the web also, two different devices. But the default package name that I'm using for here. So you get a in Android you get a key. That key is going to remain same for Android, and for web you get some key. So for example, in this I have this debug token. Yeah, I have this debug token. This token is going to stay same for this particular session or this particular local device, right? So this token is already there on Firebase. So this communication is verified communication. In your case also, both the devices or the tokens are going to be same, right? Or registered already. Depends on the plan that you have. So number of checks that happen, that depends upon Spark and CSV. You can check that in production. Okay, if you have any more questions, I'm here around. We are already timed up. Thank you. You can also connect with me on LinkedIn.